Oh yeah. 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 कोहिनूर. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. मुझे पता ही नहीं ऑडियो आ रहा है. मजे करो गाइस, मजे करो.
Mic testing. 1 2 1 2 1 2 1 2. Mic check. 1 2 4. 3 missing. Hellos. What up? Did you see that? I have a I have an intro and then now I have sing. What's up guys? मैं यार एक जगह तो खेलना चालू कर चुका हूँ यहाँ मैं सेट आउट करके रख रहा हूँ थोड़ी देर और we'll just do the entire this thing. Cash game stream with Raghav Bansal. Where is he? He's joining in. 2-5, we'll just check. Sorry. Just getting it all started. We'll fold this. Easy peasy. What's up? चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी किए. What's up? चलो पार्थ भाई आ जाओ. Yeah, where is Raghav Bansal? He is joining in, boys. He's joining in. So yes, Raghav Bansal is joining in. The stream is live. We are excited. आ जाओ. Let's go, guys. I am back. कर दे क्या दूसरा टेबल भी चालू कर ही देते हैं. इंस्टाग्राम पे डाल दिया है अपन ने. अब अपन फेसबुक पे भी डाल देते हैं. 8-9 UTG कुछ खेलना ही नहीं है. स्ट्रेस ही नहीं है. We'll fold. Sorry man guys, we've just started. Fold है. 9-7 suited on the big blind. uh
We'll defend this and not hit any gold. Fold, fold. I'll just go check meanwhile on Raghav. Perfecto. Good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck. Everyone watching, do put in a like, do put in a like. No, I'm not defending this. Let's go. Yes, if ready. यार 8-5 ऑफ एंड क्वीन 9 ऑफ से अपन कैसे राघव का वेलकम करेंगे? Sorry guys, just some not teething issues, but Raghav is joining in and before he joins in तब तक थोड़ा सेटअप वेटअप करना पड़ेगा कि नहीं? राघव भाई हीरो की तरह आने वाले हैं. Okay, joining the call with Raghav. Yes, you can probably hear him now. And I am just Raghav, you can have your camera on so that Yeah. you guys hear him. Okay, कपड़े बदल दिए हैं. हम लोग ने टेस्ट. Okay, nice. Just a second, huh? I'll just add you to that. Yep, I It's think up you there. are on this thing. Clear cam has been activated, and I'll just एक second, huh, sir. How do I see your screen? Yeah, you can see my screen, but एक second. Okay, perfecto. Yeah, and what I'm doing right now is just going to show my screen to you so that आपको easy पड़ जाए. Okay, I'll just share my screen with you and we are good to go then. उसके बाद बस ये सबसे difficult stream है because मुझे खेलना है. Okay, and yes, जो issue अपन ने पहले face किया था वो issue वापस आ गया. No, we're good, we're good. No, but I think I am yeah, your camera has been replaced with the this thing. Uh, Again? with the window. One second, I'll have to stop sharing my screen. Yeah. Yeah, I'll have to stop sharing my screen. One second. No worries. And I'll just एक second ना sir. Mhm. Application. नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिप्लेस क्यों हो जा रहा है आपका. Ah, okay. Yep, Yeah, I I think we're have good now. corrected. Mhm. Okay, all Hi guys, set are we and good? match. We are live, man. I have pocket sixes और बताओ अब क्या करना है मुझे अलग. hand के बाद, hand के बाद. Okay, so simple, guys. I'll be taking you guys through. I am यार मेरे को मुझे ना अभी ज्यादा टेक्निकल बात करना पड़ेगा जब आप अभी आपके सामने. यार ये होती है ना बात Good यार. dude. It's a very Bansal. easy, it's a very Yeah. easy game. Yeah, it's just easy. And here we'll stick to our 2.5x open and yeah, we've got 40 people watching. That is sick. And Ankush just have a jack and make us happy. Okay.
देख रहे हो मैं ओवर बेट कर रहा हूँ, देख रहे हो कि नहीं? अब उसके बाद फ्लश हुआ तो मजा ही आ जाएगा, बट यहाँ मैं हीरो बन रहा हूँ। कम ऑन मैन, लेट्स गो। Ankush, make us proud with a jack and 8 2 पे। I've not followed the hand, sorry, but टू पे तो मुश्किल है हाँ सिंगल नहीं, पे। yeah, that's true, all in। उसका भी फ्लश तो नहीं होना चाहिए, right? Anyway, even if he jams, I'm calling it off, but he doesn't have a flush, or else he would have taken action far. Maybe I mean, yeah, yes, मार। अच्छा, ये विकी अपनी टीम में नहीं है, वो बात तो श्योर है। एंड yeah, okay, I'm just going to put this on saying that stream पे आ जाओ। We are on stream with P52 Pro। आ जाओ यो। Okay, I'm just folding this on the button, ये वो। Okay, so Raghav, we are all set। uh, सब कुछ, everything is good to go। I think the stream is on। I'm just going to एक second put it on। Everything looks sorted। Just one second. Yeah, sure। गाइस एक सिंपल चीज है, क्वेश्चंस पूछो अच्छे वाले, जो अच्छे सवाल होंगे। आई हैव अ फ्री हैंड। राघव विल डिसाइड दो, बट स्टिल टू इंश्योर दैट वी कैन मैक्स आउट ऑन द यूजर्स, तो जितने अच्छे सवाल है प्लीज जरूर पूछते जाओ मैन। फोर जैक राघव, ओनली गॉट टू टेबल्स ऑन। एंड Yeah, बिफोर वी स्टार्ट, ये बता दो कि आपको कैश बीस्ट क्यों बुलाते हैं? स्टार्ट विद दैट मैन। I mean, मैं नहीं बुला रहा अपने आप को cash beast, but yeah, I've been playing for a while. You know, I was a cash game player only earlier. ओके। In for the first, I don't know, many years of my poker career, I was a cash game player. I used to mostly play like home games after a few years, but early on, I used to play uh, online cash on like full tilt poker and poker stars like since 2008, I हम्म। guess. हम्म। You know, then I moved to tournaments in 2015 after getting the Tony bug in Vegas. And then yeah, I've been playing cash since as well a little bit, but not like a crazy amount. गॉट इट, गॉट Yeah, इट। I'm playing 25 nowadays. PLO, हाँ, so we are coming to that। यहाँ, uh, okay, I'm not going away, I'm calling this। So I want to talk about the fact के ये चीजें तो है ही, और ये काफी रंगीन बोर्ड। एंड yeah, though we have like open ender, but there is it's a very wet board with flushes there and aces all in his range, तो अपन ज्यादा इस पे and a huge bet, so just ऐसे ही अभी हॉलीवुड करके कोई मतलब नहीं है, जा रहा हूँ मैं। और बराबर था बाकी का, के 10 बिग्स भी वेस्ट किया 7.5 बिग्स कॉल करके। No, I think it's fine. You got to call या this hand. But वो sixes वाला जो hand था पहले, I think because you want to stack him, no, you should go for check raise on the turn or bet big on the turn only so you can jam river. Yeah, या in general. या मेक सेंस, हाँ मैंने मिस किया। Mm. या एब्सोल्युटली कुड हैव डन दैट। Give me a stream on the side so I can see questions and all. Yeah, we have 52 people watching, and guys, we've got good questions coming in, और मेरे पास बहुत सारे questions तो यहाँ ऑलरेडी खुले हुए हैं। So राघव, आपने बताया वेगस में मैं आपको देखता हूँ, जब भी आप वेगस जा रहे होते हो तो that's a whole fun scene। But Mhm. let's travel back to 2016, जब आपने Okay. he won $337,000। Yeah, in 2017. 20, हाँ, तो उसके बाद आपको ऐसा लगा था कि यॉब होगा कि स्ट्रीम पे आओगे? But अरे यार, it's crazy man, that how was it that back then? How old were you man? 2017, I believe 2014 में आप कॉलेज से निकले थे, right? नहीं. Oh, Earlier than okay, that. okay, I okay, okay, finished in around 11. okay. Yeah. Yeah, but that tournament was crazy, man. It was a very tough field. I was not even planning to play it, to be honest. Uh-huh. But the last moment, I sold some action and I played, and it was a very, very tough field, like 125 player field, like all end bosses, like Fader Holes, and all the sickest players were there in Macau playing this. So I thought I'll take a shot, and it was a very deep tournament. Uh-huh. So I could do some funky shit and yeah, get away with being out of line a lot.
and just using my image against these like sickos, you हाँ. know. And how was Hmm. it like the entire this thing? मतलब were you did you like expected by any chance कि ये होने वाला है मेरे साथ कि तभी के लिए No, कैसा था like that was like, bro. This was like in this 125 player field, maybe like 70 of them were like the top 100 players in the world. Like, you know, it was like that. हाँ. So it was more about the experience. I want the reason I wanted to play. Just sorry, just 1 second. ओके Sorry, यहाँ one मेरा second. स्ट्रेट लग चुका है आई चेक्ड एंड यहाँ बहुत गीला सा पोर्ड आई एम जस्ट गोना चेक हियर एंड he makes it two. We'll just follow what Raghav did suggest last time. Raghav, I'm check raising here so that we can get it all in by the turn. I could have gone a little bigger, but चलो ठीक है ये भी सही है. Papa ji, start photos, guys. Fine. Now he checks here तो अभी I think I'm going. सॉरी यार मैंने आप like ये थोड़ा आज होगा because अपन you'll also be अरे यार. Yeah, good luck. Yep, we take that hand down. I psychologically I shouldn't have jammed here. I guess No. it's okay. How much does he have? 11 bigs. 11. Yeah, Yeah, you got to I don't jam, right? Yeah. Yeah, कर चुके हैं, but let's go. Cute. Cute. Going with the King of Spades. So Married to his hand. I guess this is one of the issues a lot of people face, you know. They pick up a premium hand and then can't give just get up. mad. It looks too pretty, right? With the ace king of spades and the flush draw. So I guess this is definitely one of the mistakes that a lot of recreational players definitely make. फिर हाँ तो आज कैश गेम्स का तो चित्ता खोलेंगे ही बट मैं सॉरी उसके पहले खाली वहां का अगर आप मेरे को क्विक बताओ अभी के लिए जैसे अगर आप मुझे बोलो टू विन $337 $1,000 इट्स लाइक यार I'm like मैं तो यार छोड़ ही दूं लाइक होने ही नहीं वाला so were you also of that stage only at that time कि नहीं you were pretty much there at No, that man, you know, honestly, I mean, obviously, I was stoked that I won so much money, right? हाँ Even though I sold like a decent amount of action as well. But I don't know, like when I've got like a few scores which are big 100K plus scores in tournaments, but like I've not won them. Like I've come second or I've come third or fourth or whatever, हाँ you know. And even though it's a little wrong to say this, maybe, but even after winning this much, like that feeling you get when you win the tournament, right? Even if it's for way smaller, you know, live, it's there. So it was amazing, obviously, but just a little bit of thing that, you know, fuck, if I could have won that, yeah. got it Mm. uh I think I'm Mm. just gonna call this here and यहाँ मैंने उसको check किया and luckily he's got the ace which he was a pre-flop raiser so I am going a little big uh, ये 3 bet पे आप मुझे बताना यहाँ 3 bet yes let's go guys good luck us good luck oh boy ये हो गया कल्याण let's go man we'll top up and okay guys so keep asking your questions I'm folding this now yeah this 3 bet You know, was you should try three putting the ace queen. Like I think in general, right? You should play like try to three putt as much as you can. hmm, It goes heads up. You're in position. You have a good hand. People will call it dominated hands. And in general, people make so many mistakes in bigger pots. You know, like bigger mistakes. So like those really add up. So I've always been of the thought process of just like playing super aggressive and like targeting people. Like what I used to do a lot, and I mean still do a lot is just like find the weak spots on the table, you know, especially on the people on the right, and just abuse them, man. Like just start three betting a lot, like get on their nerves, you know, and like their chance of spewing to you really go high at some point, and you know, like you do that enough, like you will kind of get that sense कि अब फटने वाला है मेरे against, like you know, got it अब ये फोन नहीं कर पाएगा, you know, अभी फोन नहीं कर पाएगा, तो you get that feeling, like थोड़ा करोगे तो you'll get that feeling, and then at that moment is the time when you have a hand to just overbet and then just overbet rip the river, you know, again understood max value. मैंने Hmm. सोचा कि पता है क्या कि इसके पहले मैंने 3 bet किया था आई कुड हैव जस्ट डन द सेम थिंग आई थॉट कि वील ट्राई प्लेइंग इट डिफरेंट बट या व्हाट यू आर सेइंग जस्ट मेक सेंस कि वो कंटिन्यू करते Hmm. रहना चाहिए था ओके वी Hmm. गॉट हेलो भाई लोग कैसे हो गुड लक राघव एंड कांता बेन गुड लक चलो शुरू करते हैं आई एम गोइंग टू कम बैक टू द क्वेश्चंस ऑल द बेस्ट थैंक यू
आज गुड लक साथ ही खेल रहा है for राघव बंसल. I'm like, okay, let's go. Uh, position. I'm gonna go for a. I think मैंने यार प्री फ्लॉप साइजिंग मैंने थोड़ा किया था, बट आई थिंक वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है. We've gone bigger. Um, Yeah, going big is good. yeah, yeah, Your hand needs protection, so must go big if you bet. perfect. We've got where is my idol? That's what Niku says. So Raghav, that's for you. Clearly not for me, but yeah. uh, yeah. What's Raghav's username on other sites, and what's your username usually? What is your username? My username has been "That's so sick" for most of my career. It's also a word which I say. I mean, a phrase which I say a lot, like maybe too much. So I guess it just came naturally, you know. That's so Nice. sick. I get a lot of time on the table. Anyone gets a bad beat, if people start typing "That's so sick," it gets a bit much, but it's a fun ID. It सही है. made me a lot of money as well. मैं आपको So टूर्नामेंट में हमेशा टॉप पे ही देखता हूँ. सो या दैट्स सो सिक इज ऑलवेज यूजुअली ऑन द टॉप साइड. एंड yeah, गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक. ओके गाइस, just आस्क अस गुड क्वेश्चंस कैश रिलेटेड व्हिच राघव हैज टू फाइंड दैट. यार कुछ ढंग का पूछा है. ऐसा मत पूछना कि मेरे एसेस क्यों फट जाते हैं, मतलब उसका आंसर नहीं होगा. बट या दैट्स सो सिक. लक्षपाल सिंह इन द चैट. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. वन ऑफ द बेस्ट. अरे अरे लक्षपाल सिंह सिंह थैंक यू, गुड स्टफ फॉर मी आल्सो. थैंक यू. Hemant is in the chat. What's up guys. uh, ओके, आई गॉट वन क्वेश्चन बिफोर वी. हम लोग ने एक्चुअली पहले ही अनाउंस किया था, तो अभी मेरे पास ऑलरेडी मैंने आज राघव को भेजा था 40 नॉर्मल क्वेश्चंस थे एंड थोड़े हैंड ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे. तो वो भी है, बट वील कवर दोस. प्लस हियर वी गॉट सौरभ चौहान सेज जस्ट लाइक यू ओवर बेट विद 6-6 जो आपने रिकमेंड किया था राघव. Mhm. डू यू वैल्यू डज वैल्यू बेट चेंज विद ओपोनेंट्स नेचर? Yeah, of course, man. Like I've always been very intuitive as a player and like not very theory oriented, you know. So I would always try to notice what's how the player's playing, and just watching a few hands, just their sizings and all, you get a bit of an idea, and then you can like exploit them better. And I think that's always the better way to play, unless you move up with stakes to a very high level. If you're playing tough games, then fair enough. You need to be theory oriented as well. But when you're playing lower stakes up to like even 250, 500, just focus on the guy and try to max exploit him. गॉट इट. आप मुझे इस पे रिकमेंड करना बाद में कि ये मैंने जो किया है मल्टी मल्टी वे पॉट है. वी ओपन 2.5x. दीज गाइस कॉल्ड एंड नाउ दिस इज द बोर्ड एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू बेट हियर. इफ इट वाज फाइन, ये सी बेट करना नहीं करना. I mean, it's okay. You can see bet really small. You don't need to go this big, like or you can check back also, or you can bet really, really small. Yeah, on like these kind of boards, um, yeah, you don't need to go too big in general because like whenever people have a lot of auto folds like ace jack, all these hands, there's so many of them, right? So they'll just fold. So you can just go small ओके. in general. I think checking is probably बट better. चेक Yeah. करते हैं. सो आर वी इनवाइटिंग लाइक वी लेटिंग देम सी अ फ्री कार्ड एंड मोस्टली इफ दे नॉट हिट इट ऑन अ क्वीन क्वीन 8 बोर्ड, सो मेरा चांस ऑफ विनिंग द फ्लॉप, लाइक विनिंग दैट पॉट देयर काइंड ऑफ रिड्यूसेस. इज द वे आई थिंक एंड आई बेट. इज दैट ओके और नॉट ओके? And see, chances reducing, of course, that's true, right? But it also depends on how much you're risking for that श्योर. event to not happen, हम्म. right? So, I mean, like, for example, just to give you a hypothetical example, if you say go all in on that flop, हाँ. right? That's definitely the best way श्योर. to win the pot, right? I mean, in general. I हाँ, mean, बट वो obviously, it's, ऑड्स और सब पूरा हिल जाएगा. या it's a blunder, obviously, but you know what I mean? So, like, it depends. Like, it's in ratio to how much you're betting, how much risk you're taking to make that bet, and then what your chances are. awesome, awesome, perfecto. Thank you, But in Raghav. general, rule of thumb, just going small, I think works best. In general, it keeps the game easy. I think people try to complicate the game too much. You know, yeah, playing easy poker is definitely the best way to go about it. Thank you, perfecto. Nice. uh okay. uh रघु भैया पीएलओ बीस्ट भी है क्या? मुझे पीएलओ सीखना है, says poker prodigy. Okay, this is getting interesting. Ace 9. PLO अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ यार ज़्यादा. I mean, I'm doing fine. I'm doing good in PLO, but a lot to learn to become much better at it. तो आप आपका ये okay, we uh, पॉट थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहा है.
Okay. Raghav, आप खाली ये याद रखना कि whenever you feel that you like a question, Right, right. just put it on this thing. So we'll be ensuring. Uh, Yeah, I'm just reading this stuff now. yeah, Rahul Poker says, I have I one. was on, I was on an old stream movie which was not loading, so Ah, Rahul Poker says, I have one question. Normal, what I notice these days, every time on big blind and play on small blind, tight player who flopped when he was on the table usually bet 3x becomes irritating. How to deal with it? Okay, that's a more of a tournament question, but we'll ask him. Small fine. blind, big blind में small blind बहुत जब आप big blind पे होते हो तो small blind काफी बार 3x open कर रहा है और it becomes very irritating to deal with. How do you Hmm. manage that small blind, big blind action में आप कैसे manage करते हो? No, I mean, obviously it depends on stack sizes, now, first of all. But in general, like it's a good situation for you. You know, one should be happy if people are 3xing into them on the big blind because you're playing in position. And if they're doing it a lot, that means that their range is also quite wide. So it's not going to be easy for them to play out of position. You know, they're going to have to give up a lot and you'll be able to steal the pot a lot, especially on the turn. So, like, you know, you must call one bet. Like, it depends on the player, but if they're opening a lot, 3x, like more than you think they should, they're also more likely to see bet a lot more. So, like, you know, you must try to be a little sticky on the flop, especially call one bet, even if you have, let's say, two overcards. If you have like backdoor flush draw, one overcard, like backdoor straight draw, one overcard, stuff like that. Just call one bet and then turn if they check, like, you know, that's a good opportunity for you to steal a lot of times, you know. Yeah. And especially on drawy boards, people will tend to, at least on the lower stakes, people will tend to not be balanced, you know, and they'll open, they might see better, but then on the turn they're like, okay, he's already called me once now, like, I mean, I probably just give up, right? So especially in spots where the board is drawy, like people like people who are not very strong regulars, they will tend to give up on the turn, you know, and then you just have an easy balance. Also, like on that on a drawy turn, for example, people are more likely to keep continue betting their strong hands. You know, so basically it just becomes easy for us to take down. So in fact, you should be happy if people are 3xing into you. Just call pre-flop. I mean, obviously, like decent hands. You call a lot of flops and try to take them away on the turn if they show weakness. So I think as a general rule, obviously it's a very simplified version of how it works, but as a general rule, I would suggest to do this. You Got know. it. I think we also come from a place of fear थोड़ा तो वो भी एक कभी एंगल आ जाता है और अगर आप शॉर्ट वाओ 45x जैम कट ऑफ से मैंने यहाँ 2.5x ओपन किया था which ठीक I feel personally could avoid also here I don't now you got a flush draw यहाँ मुझे भी नहीं पता क्या करना है I'm calling it off good luck us JMD, bro, करना ही है call. and Yeah. लगा दिया उसने यार Yeah. GG's no Yeah. worries uh yeah we'll top up here I did check raise him there and we don't hit our flush. I could have just called here also. Again, that's also a mistake in my opinion. मैंने यहाँ उसने 3.75 किया मैंने उसको 10x कर दिया which was not needed I think मैं possible flush draw के हिसाब से but yeah now I'll just check and oh wow. Probably I'll draw himself. Yeah, you should probably just bet flop, man. Like that's a decent flop for you to bet. It's a dry board. You know, backdoor flush draw bhi apne paas. You can just go small Okay and on the flop yeah, itself. yeah. Okay okay So okay when you bet the flop, they fold like better ace size and stuff. You know. sure. UTG limbs Vishnu limbs he's just with 5 bigs I'm folding here. Sorry मैं आपको आप पढ़ो मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा नहीं, I'm also reading. आप समझो मेरे पास क्या प्रेशर है मेरे को लोग बोल रहे हैं भाई आज मच्छी पना मत दिखाना कितना प्रेशर में मैं खेल रहा हूँ अब मैं ज्यादा रीजनिंग कर रहा हूँ अभी ये- It's better to play loose, man. Loose and aggro. uh, Raghav volume is a little low थोड़ा I don't know what can we do about that right now because for me it's perfect because मैं Discord से ले रहा हूँ आपका volume I'm just wondering कि Um, मैं क्या कर सकता हूँ अभी उसका maybe I can burn my headphones. uh, let's try it once Simran Mahto in the chat. Another Pocket 52. Team Pro, shout out to Pocket 52, making it happen. Today we're doing it with Raghav Bansal. Tomorrow Simran Malhotra is streaming with Shobit Bhai. So it's crazy stuff. And we got 70 people watching. Thank you, Raghav. Can you Thank guys you, hear me man. better now? I can always hear you better. Guys, stream पे आप लोग बताना कि कैसा आपको आवाज आ रहा है. If it's better, Raghav का आवाज. Simran Malhotra in the chat says all the best. Yep, shout out to Up Simran. Simran, Skylord up says good luck. Chadda ji, Good luck, good luck. Ashish.
Pulkit says, Baluga bro waiting at Adda sit and go come soon miss you. ये इंटरनल जोक क्या है जरूर बताएं हम लोग को. No, no, he's a bit of a stalker. और मुझे आपका 6-2 का जो आप और धवल मुडगल के बीच में बात चल रही थी मुझे वो भी बात सुननी है बाद में. वो बहुत वो बहुत एपिक हैंड है यार, वो बहुत ही ज्यादा एपिक हैंड है वो. Okay, okay. इसके Oh my God, it's RB, Ashish Ahuja, Arjun Chadda. Wow, all the crushers in the chat saying Sicko in the house. Oh my God, it's RB. What's क्या up बात है. guys? Yeah, yeah, yeah. Sir, big fan. मैंने मुस्कान मैम का podcast. Okay, yeah. In fact, today when I was researching, I also saw the podcast of yours and Hmm. Muskan Sethi's off the field. Okay, Yeah, is King he where on that was a fun podcast. That was cool. and yep, we get him to four. We four bet. Let's go. 4x किया है because out of position. And king 7 UTG will fold. Okay, so big fan. Let's go. भाई टेबल थोड़े बड़े कर दो. कार्ड्स नहीं दिख रहे. चाहिए और तो बड़े कर सकता हूँ मैं. उसके ऊपर डू लेट मी नो गाइस अगर आप लोग को लग रहा है और करना है तो चलो कर ही देते हैं. एक सेकंड ना सर. Hmm. How's it being What's Pocket up? 52 Pro? How's that going? How is It's that? good, man. It's good. It's good. The team is really nice, and they're very excited and enthusiastic about becoming bigger and becoming more prominent in the poker scene. I think we're doing a good job, and just gonna go bigger and bigger now. You know, Yep. Uh, they have good games, man. They have good games. Like the cash games are very good in Pocket too, as you know, because you play as well. Even like the PLO 5 action is sick. There's a lot of random shit going on there. हम्म. ओके ओके. आपको थोड़ा फीडबैक आ रहा है कि आपको भी हिंदी में बोलना है सर जी और मुझे भी बोलना है. अच्छा, हाँ हाँ, श्योर. हाँ, लेट्स गो. हम्म. मैंने थोड़ा टेबल बड़ा किया है और अब मैं अपन है ना. ओके 8 9 10 जैक अपने पास ओपन एंडर है. 7 भी वी वांट अ 7 क्वीन. वी डिड 3 bet not I want to check this back. If he checks, yeah, we'll just check this back. And not cool. We'll have to let go if he bets big. If he bets small, I think we just showdown मिल जाए तो ठीक है. Good luck us. Ace jack. He had pocket threes. Wow. Yeah. आवाज सही आ रहा है राघव भाई का. चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. वाह मैन. वी गोना आस्क. मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ. एक सेकेंड. ओके यहाँ मेरे पास क्वेश्चंस का पिटारा है सर. मैं आपको खोल हम्म. के बता रहा हूँ. एक एक करके लेते हैं. कैश गेम्स में फर्स्ट में प्रॉफिट करने के बाद खेलते खेलते अग्रेसिव क्यों हो जाता हूँ और बाद में लॉस बढ़ जाता है. आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल गो थ्रू. आप बताइए इसके बारे I think it's called winning tilt. You know, it's basically like you feel more powerful. I guess when you're winning, you're like, okay, I can't lose now. I'm invincible, almost. So I guess it comes from there. I mean, I know I've done it a lot myself. Everyone goes through a mild version of it at least. So yeah, must try to refocus, man. If you're winning and you feel like you're just spewing it all away. में. या आई थिंक ये तो अपन सब लोग गिल्टी है. इसने 4x Yeah, ये ओपन किया तो था. खुद ही करना पड़ेगा. इसने 4x Hmm. ओपन किया था. मैंने कॉल नहीं किया था विच आई थिंक इज ओके. नहीं नाउ कर दैट सकते हैं. ईसा सूर्य तो अच्छा हैंड है. ईसा सूर्य तो काफी अच्छा हैंड है कॉल करने के लिए इन पोजीशन. यू नो कर सकते हैं ये कॉल. ठीक है. ओके ओके. ऑल द बेस्ट सब गाइस. Okay, Raghav का गेमिंग टेबल किधर है. Raghav is going to do gaming next stream. Today he is नेक्स्ट वीक. just commenting. Yeah, today he is just कि भाई ही मेरे इज को गेटिंग चाहिए. यूज्ड टू माय हाँ, फर्स्ट स्ट्रीम ये बेसिकली. अपने को दिखा रहा है कि भाई एस 5 के साथ कॉल करना था क्या नहीं करना है. सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. पैसे पैसे बच गए लेकिन आई गेस ये कॉल करते तो हार गया. हाँ वो तो है बट अभी
या ये ऐसा हम लोग सोचते हैं, ये राइट वे तो सोचने का बिल्कुल नहीं है, बट हाँ, ओके, सो Just sorry, just give me a minute, huh? हाँ Sorry. हाँ, श्याम जी, this is all the best, thank you, ace king for us, all the best भाई लोग, क्वेश्चन पूछो. ओके, गुड क्वेश्चंस आर टेकिंग डाउन टिकट्स, वी गॉट अ जैम ऑफ 43 बिग्स, आज एक भी फ्लिप अपने नसीब में नहीं गया है, गुड लक अस. Calling it off. Ace King versus King 10. Ace is there. Let's go. Let's go. Let's go. We get one good pot. Oh, let's go. Let's go. Shamji Yadav. Okay, okay, okay. Sorry, I was just seeing off my dad. He was here. Right. Huh. What were you asking? No, nothing. Okay, next question was Hmm. what are some common mistakes or pitfalls that players often encounter in cash game? Common mistakes क्या लगती है जो आपको एक cash game players usually go through करते हैं, and उसको कैसे avoid करें, profitability ज़्यादा कैसे लेके आए? I mean, depends what level we're talking about. But I guess if we talk about people who are not playing like higher stakes, obviously, हाँ, like let's come to 25, uh, 50, 50, 100. right, right. I think ek to obviously playing too many hands is obviously a big one. Play lesser hands, play more in position. Don't play too much out of position. Don't feel too compelled to call the big blind in cash games. You know, it's not the same as tournaments. In tournaments, what happens is, आपका अगर stack छोटा होता है उसमें, you are allowed to call more hands. You know, Sure. because you can stack off lighter. हाँ, राइट अगर आपके 100 बिग ब्लाइंड्स है लेकिन तो आपको मतलब यू नीड टू रिवर्स इम्प्लाइड odds काफी होते हैं उसमें लाइक वेयर से इफ आई कॉल विद लाइक क्वीन 8 ऑफ ऑन द बिग ब्लाइंड दो लोग ऑलरेडी कॉल करके आए हैं तो अगर मेरी क्वीन लगती है तो मैं काफी हारूंगा उसमें whereas I will not really win much if I hit my queen so whereas in tournaments if you hit your queen like you have 12 bigs for example 15 bigs is fine like you are happy getting it in you might even get in against like weaker hands but in cash games you need to have more nutted hands. Like, you need to play hands which will make better hands, like suited connectors, like pocket pairs to make sets, obviously, like high cards, like obviously suited aces, stuff like that, suited broadways. एक तो ये बहुत बड़ा mistake है like people want to play like a7 off and stuff from cut off or whatever it's terrible there's not as much value in stealing in a cash game as it is in a tournament because tournament में आपका antis भी होते हैं तो there's more to win plus अगर आपके पास for example 15 बिग ब्लाइंड है और आपने ओपन किया और लोगों ने फोल्ड कर दिया आपको 2.5 बिग ब्लाइंड मिलेंगे that's a decent chunk of your stack that's a big win for us टूर्नामेंट्स में whereas करेक्ट. अगर आपके 150 बिग ब्लाइंड से खेल रहे हो आप तो आप A7 ऑफ कर ओपन करोगे कट ऑफ से आप 1.5 बिग ब्लाइंड जीतोगे इवन इफ एवरीवन फोल्ड्स इट्स नॉट रियली लाइक श्योर. so you must tighten up the ranges change a little bit play tight and play good suited hands bigger pairs like set mines stuff like that play that's one so I think playing too many hands in the wrong kind of hands then I think what else do people do ये people लोग काफी क्या काफी aggressively मस्त रहते था, हैं ये काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन था कि दैट वो एक तो रिवर्स इम्प्लाइड ऑड्स के अभी मैं 140 बिग्स खेल रहा हूँ और 137 के हाँ सामने मैंने क्वीन 6 अभी डिफेंड किया होता तो कैश में करने की हाँ जरूरत नहीं है. नहीं है मतलब जरूरत हाँ, नहीं है क्योंकि जरूरत क्वीन भी लगे 6 भी लगे और उसका कुछ और हो तो आप ज्यादा ही मतलब उसमें Yeah, खतरे में. passively खेलना पड़ेगा ना mostly passively खेलना पड़ेगा that's करेक्ट. not a situation we want to put ourselves in as much in general yeah नाइस. um, एक तो अग्रेसिव ही नहीं खेलते लोग ये बहुत बड़ा लीक है आई गेस लाइक थ्री बैट नहीं करते ज्यादा लोग लाइक थ्री बैटिंग या तो कोई कोई पागल लोग होते हैं जो बहुत करते हैं ऑब्वियसली बट हाँ, इन जनरल लोग पैसिवली खेलते हैं वो कॉल करके फ्लॉप देखते हैं थ्री बैट इंस्टेड लाइक you can even like a lot of cash game players will just play three bet or full strategy, not call as much, not call as with as many hands. You three bet, you make the pot bigger, you have control of the pot. People make bigger mistakes when they are playing bigger pots. So and three bet pots. So yeah, a couple of these things I think are definitely big leaks. नाइस नाइस. सम अप Mm. करूँ तो हाँ, टाइट खेलो, इन पोजीशन ज्यादा खेलो, अग्रेसिव Tight खेलो. kilo and position kilo, aggressive kilo. Tight and aggressive. That's the way to play. You make hands, you fucking bet, like you try to get as much money in as possible. And especially in the lower stakes, people are paying off for no reason. Like people are sticky. Uh, so just like make hands and bombard them like pot, pot, pot. Overbet all in. Like गॉट इट. yeah, try to get as much money in as possible. नाइस. Mm.
मैं एक अभी आपको एक हैंड ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताते हाँ रहिए कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो जरूर बताइए कि उसको अपन टिकट्स हाँ। देने वाले हैं, कुछ भंडार टिकट्स है कितनी राघव। टिकट्स अपने वहां देने के लिए? अरे आप जितनी दोगे उतना है। सो वैसा है। ओके, लास्ट टाइम आल्सो ही हैड 3 bet एंड आई फोल्डेड, दिस टाइम आई एम गोइंग टू, जो अभी सीखा है तो थोड़ा बन जाते हैं टाइट अग्रेसिव सब साथ में। अभी अभी खिचड़ी होने वाली है, हम अग्रेसिव होने वाले, टाइट जाने वाला है, अब मजा आने वाला है। तो अच्छा, मेरा हैंड ओरिएंटेड क्वेश्चन एक जन का ये आया था। आई ओपन 2.2x विथ एसेस फ्रॉम यूटीजी। तो ओके। यूटीजी से मैंने एसेस ओपन किया 2.2x एंड बटन पे किसी ने 11x कर दिया। अब मेरे पास फिर से ओके। आया, तो मैंने उसको 23x कर दिया। 11x का हम्म। उसने 3 bet को ये क्या 4। कैश कैश गेम का हैंड है ये? सब कैश गेम्स कितना? हैंडी है। अच्छा अच्छा। इफेक्टिव स्टैक नहीं है, नहीं दिया है, वो क्वेश्चन में नहीं आया है। राइट हाँ, तो राइट कितने राइट। डीप है वो सब नहीं पता है, बट लेट्स अज्यूम 100 बिग्स डीपी है अभी के लिए। ओके तो ठीक है। मैंने 2.2x ओपन किया, उसने 11x 3 bet किया। यहाँ हम्म। अपने को इसने, जस्ट फोल्डिंग। ओके ये गुड बोला है विकी, मेरे अगेंस्ट है हाँ, कब से। हाँ, सो मैंने फिर इट केम बैक टू मी, मैंने 4 bet किया टू 23x एंड ही फोल्ड्स। तो हम्म। व्हाट इज अ गुड साइजिंग देयर टू कीप हिम इन द पॉट एज वेल इज द क्वेश्चन। मतलब there's two ways. Like if you feel like this guy is very aggressive post, see like when he makes 11 bigs, he's quite likely to bet big, like post flop as well. If he's going this big pre, it's a relatively fair assumption to make that he's going to bet bigger on the post flop as well. So I mean, there is a case for calling because it looks very strong to four bet. But if he's a spewy kind of guy, like you can just make it like 28, 29 bigs. Like it needs to be a sizing कि आप ब्लफ्स भी क्रेडिबली रैप कर सकते हो। अगर आप ब्लफ कर रहे हो, आप थोड़ी करोगे 23 बिग्स, ना है हाँ। ना? अगर आप वो उसको 12 और कॉल करने हैं, वो थोड़ी करोगे आप, यूजुअली नहीं करोगे ना। तो थोड़ा बड़ा करना चाहिए कि ऐसा लगे कि ठीक है, मतलब मैं ब्लफ भी कर रहा हूँ तो ये साइज करूंगा, अगर बड़ा हैंड है तब भी ये साइज करूंगा, वरना या आई मीन देयर इज ऑब्वियसली लेवल्स टू दिस। यू कैन do this as a level and like make it look stronger and stuff, but it's not advisable to go down that path. Just try to be a little bit श्योर। balanced in that sense कि अगर आपके value hand is like a small thumb rule to go by is, for people who are watching who are not used to like thinking in a balanced way or even slightly in a balanced way is, अगर आपके वैल्यू हैंड है तो आप सोचो कि चलो ठीक है, अगर मैं ब्लफ कर रहा होता यहाँ पे तो मैं क्या कितना बेट साइज करता, करता। क्या size करता मैं? Just a small little question you can ask yourself during the hand, and then you can kind of correspond it to that a little bit, and the other way around as well. अगर मैं वैल्यू बेट कर रहा होता, कभी क्या मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि अब रिवर तक पहुंच गए हैं दोबारा बेट करके, अब उनको ब्लफ करना है बिकॉज उनका गंदा हैंड है, बट उनको ज्यादा रिस्क नहीं करना, तो वो छोटी बेट कर देंगे, ले हाफ पॉट बेट कर देंगे, बट यू श्योर। नीड टू मेक योर स्टोरी नीड्स टू एड अप, नो, लाइक आप सोचो कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे। अगर आप मोटा हैंड रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या हाफ पॉट बेट करोगे? अगर पॉट में 40 बिग ब्लाइंड्स है, ठीक है, आपके पास 60 बिग ब्लाइंड बाकी है, ठीक है, तो आप क्या 15 बिग ब्लाइंड बेट करोगे रिवर पे? इतने मोटे हैंड के आप बड़ा बड़ा बेट कर चुके ऑलरेडी आप, नहीं, तो आप थोड़ा सा ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द स्टोरी. श्योर। I'm three betting here. Latest ज्ञान सीख के, I remember old me would have just called Yeah. here. Old me would have just called, to be honest. हाँ. And I just wish I would have called. अच्छा, नहीं ठीक है. And now how we play it is going to be interesting. Uh, probably. Let me know, मतलब मेरे माइंड में यही है कि अब मुझे रैप करना है कि आई हैव द प्रीमियम्स, तो मेरे को थोड़ा उसको वैसे ही खेलना है, एंड दैट्स व्हाई आई डिड सी बेट किया। Yeah, that's fine. That's fine. Like, I mean, this is a good hand to three bet. Like in cash games, these are the kind of hands you wanna, like three bet basically. You don't wanna, like, tournament ranges are slightly different because the stacks are smaller. It's a little different. In cash game, you're deep. You wanna have like stronger hands, श्योर। which can make good hands. Yeah. ओके, सही है। uh, एक और हैंड का बाद में आते हैं, अभी विल कम टू द हैंड Hmm. क्वेश्चंस मोर। अभी यहाँ से किसी का आ रहा है, विल कम Right. हियर सो दैट Right. आप टिकट्स दे सको, Right. एंड वी आर Right. गिविंग अवे गुड टूर्नामेंट टिकट्स, वी आर गिविंग अवे गुड कैश टिकट्स। तो ये बताओ, ये है। okay. Guys, is my sound still too low? नहीं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अभी अच्छा है, किसी का आया था। Okay. एंड राघव, मेरे को एक और चीज बताना, मैंने टेबल पे किसी पे अपन नोट्स नहीं बना रहे, तो आपको मुझे सजेस्ट, लाइक अगर आप कर सको ना कि आप कभी नोट बनाते, अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो प्लीज मुझे रेकमेंड करो ना। Okay. Sure. Sure. श्योर, वो भी एक, आप, आई एम सॉरी आई एम पुटिंग दूंगा. टू मच ऑन यू, बट No. No. आज Chill. Chill. आप, हम लोग एक स्ट्रीम में पूरा ही जितना आपको आज जितना ज्ञान दे सकते हैं लेने वाले। सो या, ओके, हाउ टू कैच स्ट्रॉन्ग हैंड एंड ब्लफ।
Now that's a very open question. तो यहाँ भाई ये हाउ टू कैच स्ट्रॉन्ग हैंड एंड ब्लफ, हाँ ये तो ये मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई, रिपीट करिए, लाइक रिव्यू हाँ फ्रेम इट इन डिफरेंट वे, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, ओके हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग हैंड एंड ब्लफ, you don't need to bluff when you have a strong hand, you know, नहीं नो वरीज नो value that. वरीज आ जाएंगे वापस से Okay. 8 बिट रहेगा अकी बोल रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है बट भाई जब मुझे पता है कि ओपोनेंट के पास क्या कार्ड्स है रिवर के बाद मतलब आई थिंक हम्म, शोडाउन पे ही नोज क्या कार्ड्स है पर उसके कार्ड्स देखने के लिए क्यों बेट कॉल कर देता हूँ सो ही नहीं वांट्स ये तो नहीं कर सकते भाई, ये तो बंद करना पड़ेगा, पैसे उड़ा रहे हो ऐसे तो आप बहुत, ये तो दिस नीड्स टू स्टॉप नाउ basically. You cannot like knowingly call to see his cards. Like if you make a bad call, and I mean, and that's okay, that happens sometimes obviously, but and that's supposed to happen sometimes, but like just to like when you know कि अच्छा मैं कॉल कर जिस भी पत्ते देखने, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होएगा, आप बहुत पैसे हारोगे, ये करना बंद कर दो इसके लिए, हाँ. You हाँ have to be disciplined, man. नाइस 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 तो ये तो सिंपल है कि ओके ओके हाउ टू मेक अ राइट वैल्यू बेट क्या सोचते हो आप कितना देगा बंदा व्हाट इज अ गुड वैल्यू बेट डिपेंड्स, अब जैसे अगर थोड़ा मतलब वी डोंट हैव अ थोड़ा रीड स्ट्रॉन्ग प्लेयर प्लेयर पे बन रीड जाए, नहीं है समझो रीड नहीं है प्लेयर पे रीड नहीं है, तो I mean, it depends on the situation, you know. Like, just think like what hands do you think he's likely to have, you know, and you can bet accordingly. Like, for example, अगर आपके पास if you flop a set, for example, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि जितने मतलब मैं उसके स्ट्रॉन्ग रेंज को टारगेट करूं, कि जो उसके स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनसे मैं सबसे ज्यादा पैसे लूं. I want to make the max out of that. So you size your value but accordingly. Like, you know, अगर आपको लग रहा है कि लाइक काफी वीक रेंज है उसकी रिवर पे, आपके पास भी है डिसेंट हैंड, आपको आपको पता है आप गुड हो, और उसका आपको पता है कि उसका ज्यादा बड़ा हैंड भी नहीं है, लेकिन मच्छी टाइप का प्लेयर है, वो कॉल कर देगा, तो छोटी बैट करके ले लो जितनी वैल्यू मिल सकती है आपको, यू नो, जस्ट बी प्रेजेंट एंड या यू कैन या हैव आई थिंक अकॉर्डिंगली. बोर्ड टेक्सचर भी काफी चीज डिसाइड करेगा राइट कि उसके पास हाँ क्या था हाँ, आई अंडरस्टैंड अग्रीड 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 correct ओके correct. I think people are not being able to hear me as well. नहीं अभी ऐसा नहीं आ रहा है Okay. ऐसा अभी ऐसा तो नहीं आ रहा है आई डोंट गॉट एनी Acha. क्वेश्चन Is there a place where I can increase the input volume? I don't think so, right? एक सेकेंड मैं मेरे साइड से अगर इंक्रीज कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ ओके हाँ वो. मैंने किया मेरे साइड Okay. से थोड़ा और जो Okay. कर सकता था Okay. सो आई थिंक दिस Sure. शुड बी गुड अब Hmm. सब लोग और अच्छा सुन पाएंगे Hmm. या ओके फेयर इनफ okay this is a okay Jay Farrow का question is really nice कि if I नहीं actually नहीं if I realize that a person on my table is prone to tilt easily then Hmm. do I do everything I can to tilt him like just, okay very nice question like typing This something in guy. the This guy. chat like typing something in the chat or throwables or will it be considered unethical This guy. or rude I like This, first of all, this guy should get a ticket for sure. Jay Farrow is winning a ticket And, nice uh, it's a good player I, वो स्पीच प्ले की तरह विलियम कसूफ जो करता है वैसा वाला फील आ रहा है मुझे हाँ I mean, this is a very interesting question. I think it depends on you, bro. Like, it's a very personality based thing, you know. And I think until you keep it civil, I think it's fine. It's part of the game, I guess, almost, you know. But Mine's big. हाँ yeah, I think as long as you keep it civil, yeah. But there's other things you can do in game, like, you know, like अगर वो ओपन कर रहा है तो थोड़ा टैंक करो, अगर उसको थ्री बेट नहीं भी करना है साथ में, ठीक है, थोड़ा टैंक करो उसके ओपन पे, उसको और इरिटेशन होगी आपसे, लेकिन ये हट एंड थ्री बेट का नहीं सोचता है जब भी मैं ओपन करता हूँ, यू नो. और ऐसे कर करके आप उसको अपने अगेंस्ट स्टिल ज्यादा कर सकते हो, और जब आपके होंगे हैंड्स तो फिर आप उसका फायदा उठाना, got it you know. But ये yeah, I mean, you can trash talk. I think trash talking is totally cool, man. I think people get, yeah, I think people should do it if they really want to, but of course keeping it civil, you know. Hmm. I messed up this hand आप ये hand देखना एक बार मतलब ज्यादा कुछ छोटा ही था बट मैंने एंड में वैल्यू वो बेट के देखा लिए नहीं मैंने. हाँ 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 इसलिए मैं रुका वो था कर. हाँ वो थोड़ा Hmm. बिकॉज यू वर वो टॉकिंग तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया बट मैंने खाली hmm. एंड में वो किया कि आई मतलब आई ऑनेस्टली आई कुड I didn't see it at all. Show me that. या कैन यू सी द हैंड कि छोटा दिख रहा है एकदम नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा. जी जी We had ace nine. I had ace 9 I opened he called with queen 10 board was 8 10 8 both checked
9 on the turn, and he bets 5.5 bigs के pot में 4.5 big 4 bigs. I Okay. call it Right. with I hit my 9. Flop Yeah. turn पे river पे 2. He checks. I could have just checked for showdown. I had a 9, but I just thought कि क्या मैं Yeah. value ले सकता हूँ, तो I मैंने mean, 10 10 8 9 दूस था ना. हाँ हाँ कर सकते हो. I think value bet करना ही है actually वहाँ पे तो. ठीक ही था ना वैल्यू बट, तो 13.5 बिग्स में मैंने 5 Yeah. बिग्स डाला. क्या उसके पास क्या था? उसने कॉल किया क्या? क्वीन 10 दिखाया, तो उसके पास 10 था. Okay. That's it. Now you can make a note on this guy. This is definitely a noteworthy kind of thing that just wait, did the flush get down the river or on the No, turn? no, Because I didn't see the flush hand. got there on the turn. A flush draw was getting complete on the turn. Right. But उससे कुछ, Right. yeah, but his नहीं तो flush draw होता तो he would have bet on the flop, right? I guess. नहीं, I mean वो out of position था ना वो. हाँ, वो out of position तो था. So out of position है तो cannot expect him to just lead with a flush, no? Sure. Flush draw. Yeah, that's yeah. Okay. In general, most people will check only. So yeah. Fair enough. आई थिंक ये सेम हैंड हो गया जो आपने स्टार्ट में मुझे बताया था कि मैंने चेक रेज नहीं किया वहां, और अब मैं यहाँ. ओके, ही इज गॉन ऑल इन. नहीं नहीं, यहाँ पे तो चेक कॉल ही करना था, लेकिन क्योंकि जब स्टैक्स छोटे होते हैं ना, हाँ. तो अपने स्लोप में ज्यादा कर सकते हैं. इन जनरल अगर स्टैक्स छोटे हैं तो स्लो प्ले कर सकते हो आप, क्योंकि यू विल स्टिल बी एबल टू गेट ऑल द मनी इन बेसिकली बाय द रिवर. गोल है जब अपना मोटा हैंड है कि अगर जो उसके अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, आप ब्लफ भी कर रहे हो, तो मनी शुड ट्राई टू गो इन. तो जब बहुत डीप हो गए तब आपको चेक करना जरूरी है फ्लॉप पे. करेक्ट. अगर अगर डीप ज्यादा नहीं हो तो ठीक है, वो ब्लफ भी करते हैं टर्न पे, उसका इक्का भी लग सकता है टर्न पे, कुछ और लग सकता है उसका टर्न पे, तो पैसे हमें मिल ही जाएंगे रिवर तक, यू नो. ओके. Okay, this is Aki and Minkle Singh Parihar it's a question which many new kid in town is a reg. Aces finally. The question is कि what's the table पे minimum buy-in करके खेलना चाहिए या maximum buy-in करके खेलना चाहिए? I prefer to buy in around 25 BB and build from there. तो एक जन ने ये comment किया है. So yeah. I mean, it depends, man. Like, I mean, see, I always like to sit deep, because yeah, it's just it's I'm more profitable, I think, to sit deep. But I mean, there's nothing wrong in sitting with a smaller stack and trying to grind out and, like, you know, like kind of free roll to a bigger stack or more profits, and risk less. It's okay. It's fine. It's okay to do that. You know. Okay. Yeah. So usually, स्पेशली अगर आप थोड़ा स्पेशली अगर थोड़ा सा और स्पेशली अगर थोड़ा सा बैंक रोल के हिसाब से तो हाई खेल रहे हो, तो इट्स फाइन टू डू दैट. आई मीन, इन जनरल आई वुड सजेस्ट to move down in stakes and buy in for bigger stack, but yeah. Okay, so aces tha, we he opened 2x, we made it 7x. He calls flop ye tha, we put 6 bigs in a 15 big spot. He just called. There's a jack now. We are betting about 66%. जितना बात किया उतना कुछ जरूरत नहीं थी. I was just trying to update you, but yeah, fair enough. But ये होता है कि short stacks में ये भी है कि, like, you know, a lot of people ask me this also on stream, तो मैं भी, like, I don't know, because I've also read two theories, you know, कि आप 100 bigs खेल रहे हो deep तो आप maneuver कर सकते हो ज्यादा, खाली fold नहीं करना है, I mean jam नहीं करना है आपको, and also like, I mean, proper poker खेल सकते हो 100 blinds deep, जब ये cash gains supposed to play. आप short stack खेल रहे हो तो you avoid a lot of people from bluffing you. मतलब मैं अभी 25 bigs खेल रहा हूँ तो कोई ज्यादा bluff नहीं करेगा, because he's like, अरे ये तो डाल देगा अंदर, because SPR और सब इतना लो हो जाता है, तो वो सब चीजें हो जाती है. एंड आई डोंट लूज माय एंटायर स्टैक, मतलब अगर कोई बैड बीट भी हुआ तो एंटायर स्टैक नहीं जाएगा. व्हाट इज लाइक योर टेक ऑन दैट? मतलब आई पर्सनली बिलीव कि इट्स बेटर टू बाय इन फॉर मच मोर देन 25 बीबी एंड जस्ट ड्रॉप डाउन इन स्टेक्स. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा उस स्टेक में बाय करना पूरा 100 बीबी के लिए, तो आप एक छोटा स्टेक खेल लो उससे और फिर बाय कर लो, लाइक 60-70 बीबी कर लो. बट इट्स बेटर आई थिंक इन कैश गेम्स टू हैव अ बिगर स्टैक, बिकॉज लोग काफी डोनेट कर रहे होते हैं. इफ यू रियली वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द पीपल हु आर प्लेइंग बैडली, तो आपके ज्यादा स्टैक अगर हो तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो, बिकॉज उनके जो मिस्टेक्स है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यू नो. श्योर. ओके, आपने इस पे नोट बनाने को बोला था जो इसने क्वीन 10 वाले हैंड पे, इफ यू रिमेंबर, तो क्या नोट बनाना था इधर? इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स ओके, वी विल कम बैक टू इट. Queen 10, yeah, I mean, like he basically bet big on the turn, no? And then he randomly checked the river basically on a brick river. Yeah. So I mean,
in general, so basically you can make a note that um, you know, not to value bet too thin against this guy because उसके पास randomly बड़े hands भी हो सकते हैं checking range में river पे. Okay, You okay, know, yeah, but ace nine तो हमें फिर भी करना था bet. Ace nine is a very strong hand in that situation. But in general, अगर इसकी tendency है, मतलब you can just write like he is capable of checking strong hands on the river. okay. तो या मतलब नोट जब बनाओ ना तो थोड़ा सिंपल नोट्स बनाओ बेटर रहता है. जैसे अगर आप पूरा हैंड लिख दो वहां पे, मैंने ये किया टर्न पे, हाँ उसने तो ये आप किया, ये हुआ वो हुआ. अब आप जब आपका कोई हैंड आप खेल रहे होगे उसके बाद एंड आपको ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास देखने के लिए क्या नोट है, ना तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और आपके पास वो पूरा टू लाइन का वो आएगा हैंड में क्या हुआ है, यू नो गोना बी एबल टू यूज इट वेल इन द श्योर हैंड. नो, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है चाहे वो छोटा ही हो, टेंडेंसी. 3-4 वर्ड्स का भी हो, वो लिखो, वो मच बेटर है. अच्छा हम्म. अच्छा, या ब्लॉक्स अ लॉट. हाँ, हाँ मतलब सिंपल है कि हाँ मतलब वही गॉट इट. परफेक्ट. yeah, that's okay, like, you know, but yeah, just simple stuff is always better. ओके ओके. टू मैनेज एंड इंक्रीज bankroll, what kind of advice would you suggest? Play good poker. To manage and increase bankroll, हाँ. I mean, yeah, play good poker, like just keep I mean, I guess, yeah, work on your game a little bit and play, like, find good games. Like, don't play when you're not playing well. Like, उठ जाओ उस टाइम. Like, अगर cash खेल रहे हो अगर, तो आपके ऑप्शन है कि गंदा खेल रहे हो तो उठ जाओ उस टाइम ना. जब अच्छा खेल रहे हो, यूजुअली क्या करते हैं लोग, उल्टा करते हैं लोग. यूजुअली जब जीत रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ये स्टैक लॉक हाँ करके निकल लो, है ना. और जब हार रहे होते हैं उनको लगता है कि चेस करते हैं लॉसेस, यू नो. तो ये उल्टा है, ये उल्टा होना चाहिए. जब आप हार रहे हो, यू आर मोर लाइकली टू प्ले बैड एंड यू आर ऑलरेडी लूजिंग. ऑल्सो अदर पीपल आर ऑलरेडी ऑन एवरेज विनिंग इफ यू आर लूजिंग ऑन द टेबल. तो वो श्योर. स्लाइटली बेटर खेल रहे हैं, स्लाइटली बेटर फेवर माइंड में है. तो मतलब जब आप गंदा खेल रहे हो, हार रहे हो, उठ जाओ, थोड़े टाइम बाद खेल लेना. एंड उल्टा, व्हेन यू आर विनिंग, यू शुड कंटिन्यू प्लेइंग. That those are times when you can make like a good amount of buy-ins in one session. नाइस. मेरे को उससे इससे अभी कोई इंसिडेंट याद है. ओके, वी ओपन 2.5x, ही कॉल्स, दिस इज द फ्लॉप, वी मेक इट टू बिग्स 40%, he makes it this, Hmm. let go. Yeah, you should open bigger, man. You should open like 3x if you Okay. open small blind. Yeah, because you need to incentivize him to fold. हाँ. You know, so you need to skew the sizing like that. So because not all the hands you want action, right? Sure. Correct, You correct, want a correct. lot, and you want him to just fold. So you need to make it slightly bigger. So 3x, yeah, is good. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. सही है. Hmm. परफेक्ट. मैं खाली वो इंसिडेंट बता रहा था कि हम लोग जब कनेक्ट करने बैठे थे प्री स्ट्रीम, तो मैं वो पॉकेट 52 के प्रैक्टिस वाले टेबल पे मैंने वो सेटअप किया था. सो Hmm. राघव के व्हेन ही सॉ समवन विद 800 बीबी, तो ही सेड अरे भाई ये तो बहुत मस्त स्टैक है. मैंने बोला कि अरे प्रैक्टिस टेबल है. ही सेड अच्छा, बिकॉज़ दैट वाज ओके. I started playing tight and folding good hands as I was reaching towards ITM. Should I do such play? Okay, tournament oriented है, but क्या क्या? I Wait, sorry, what? started हाँ. playing tight and folding good hands as I Hmm. started reaching towards ITM. Should I Hmm. do such play? हाँ, मतलब आईटीएम के क्लोज हो तो टाइट खेलना चाहिए बिकॉज यू वांट टू ट्राई टू मेक द इन कैश. या आपके इट्स बेनिफिशियल फॉर यू टू ट्राई टू प्ले टाइट एंड मेक, एंड इफ अदर पीपल आर गोना बस्ट, यू नो, जस्ट मेक मनी for free in a way, right? Like, so must play tighter before the money bubble bursts in a tournament. Yeah, but if you have a big stack, it's also important to try to put pressure. Unless there's a reg behind you who's a good player, उसका भी बड़ा stack है, तो वो pressure डालेगा, तब मत करो. But अगर आपको लग रहा है कि you'll get away with it a little bit, तो आप तो अब्यूज भी करो उस टाइम. दो टाइम टू पिक अप चिप्स, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट, अगर आपका छोटा स्टैक है तो आप फोल्ड कर रहे हो ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टैक्स इन टेबल विल बी ऑन द रिलेटिवली स्मॉलर साइड. तो उनके लिए भी अप्लाई होता है वो, तो आप उनको अब्यूज करो जब आपके बड़ा स्टैक है. और आपके जब छोटा स्टैक है तो आप खुद फोल्ड करना पड़ेगा, आपको टाइट खेलना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए कैश करना इंपॉर्टेंट है. Got it. ये मैंने खाली मस्ती के लिए. He opened 3x on UTG. I decided to हम्म. call with 7-5 suited. Is हम्म. that call which you will you make कि आप नहीं करना चाहो, करो ही नहीं, ऐसा सब काम मत करो? It's Because so it's that yeah, अगर probably आपका board avoidable. हो तो you make a lot of money. How what is that story like? Hmm. If it does hit and you make a Yeah. lot, does that story count कि मतलब मैं यहाँ अभी भी check raise करूँ to show a queen, like अभी मैं नहीं कर रहा, fold कर रहा हूँ, but ये सब करना चाहिए कि you should not be doing it only? Depends, yeah, depends. क्या बोर्ड है, क्या सिचुएशन है, मतलब वही. Actually, it's funny because like most poker questions can be answered by it depends, like, you Yeah, know, yeah, yeah. but it really does depend.
Yeah. And we also do that only, like अभी अगर मैं भी अकेला होता तो कभी करने के लिए we would do it, but right now because we just have Mm. you watching, so it's just fun to Mm. actually ask कि मतलब वो बकचोदी करनी Mm. चाहिए यहाँ कि नहीं करनी चाहिए, like हाँ. if But you better can than pull it off. calling, अगर आपको hand खेलना है, is better to 3-bet, bro. 3-bet करो, like what's gonna happen is 3-bet करोगे, fold भी कर सकता है pre-flop वो. उसके बाद आप check, he can fold on the flop also. So there's a lot of ways to win now. So it's better to take the Sure. aggressive lines, I would say. If you want to play such weak hands, then you may as well just 3-bet him. Okay, we have an open ender Mm. here, a nine or an ace, and he's deep stacked, so we are betting. Mm. Sorry guys, I'm trying to keep up with the questions, but um, या बहुत सारे मैं भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ थोड़ा. Yeah, we take that down. Simran, your question about semi-bluffing with straight draw and flush draw on ace high or king high board is the right play. It depends. Like I mean, but like if you've just called and the other guy is the aggressor pre-flop, probably shouldn't be check raising on ace high boards. Because like that is their board. Like they have better hands than you on that board. So, but like I mean, if you have a straight draw and flush draw, it's fine, man. Like mostly you will have just so much equity that it's fine to do that. Yeah. It doesn't matter. But I guess maybe if the draws break out, if you check raise flop, for example, you bet big on the turn, and then river you don't hit, it's like a brick. Like probably just give up then, because people tend to, if the pot has become big, people tend to just not fold on the river, and especially when all the draws have missed. Um, What advice would you give to people who are new to poker is a good question, if you can answer that. um, don't start playing high stakes. First of all, like be play stakes which you feel comfortable losing money in. Like you should go in with the mindset that what, I'm okay losing this much, and yes, that's always the first thing I think, because we never want like someone to start the game and then just get in like neck and deep. And so um yeah, but you can, I think watch streamers play. I think that's a good one. That's a good way to learn. We're watching people play. मजे भी आ रहे होते हैं. Like you can watch Parth play, for example, and a lot of other streamers as well. And yeah, watch people play, and then just start small, like and just try to be more aware when you're playing. I think like just few things like that. I think really helps. Got it. Yeah, you can get a, if you're serious about the game, you should get some course maybe, like there's a lot of cheap courses out there, like a lot of cheap free content as well, which a lot of people post on YouTube. So check those out. Maybe if you have a friend who you feel is a better player than you, discuss hands with them. Like tell them to see you play sometime and like comment on that, just stuff like that. Have you ever faced a long downswing? And if so, during the downswing, how did you handle it? To keep calm, how do you manage it? Please provide some tips. And tell us Yeah, some so nice, I mean, interesting stories of yours as well. I mean, yeah, I had a pretty bad downswing. I think from 2021 and 2022. Like it was horrific, to be honest. Like it was almost quite funny. Like in Vegas as well. I mean, the kind of stuff that happened. I hope that no one has to go through that. Wow, When and you're at two the world, years? when you're at And the two World Series. years? Yeah, I mean, to be very honest, I did not play as much also during those 2 years. But yeah, it was quite brutal, and I think I mean I haven't definitely not been through this kind of downswing ever before, and I think most people don't go through such a bad downswing. But yeah, you are bound to go to downswing. That's just part of poker, and it's easier said than done. And I also struggled with it this time a little bit. I think because of the nature of how bad it was and for how long it was. That's just normal. Like everyone's gonna go through that in their poker career. But I think it's important to kind of keep your head, like be level headed, like and have other things in your life that give you joy and make you happy. And like I think it's much easier to get over a downswing when you have other things in your life which are working well for you. And like poker is not just the be in, like everything in your day. Like if your poker goes well, then you're happy. If your poker doesn't go well, then you're not happy. That's never a good situation to be in. So if you're going to downswing,
chill with your friends more, I would say. I think that is a good advice. Yeah. Wow. Put in some more work, put in some more work, show up on time. Like that's, I think, a big thing as well. Like if you, like, especially if you play tournaments, for example, right? Like if you're going to downswing and stuff, show up on time, man. Like, you'll just mindset wise, you like, what? Okay, I fucking showed up at 8 p.m. and I started playing. Like, and then that I think just small little wins, I think, can really help in getting over a downswing. Hmm. Nice. I played this unnecessary. Okay, that's valuable. Uh, say Simranka, you answered. Hmm. If a player has aces and on the board comes four cards of heart and an ace of spade, and you miss the flush and on the river, opponent goes all in. What should we do? Hmm. Fold or call with three of a kind? Fold, bro. Like if it's a big stack, yeah, I guess. Yeah, people don't really bluff as much, man, when the one card flush is there, no? So in general, I think folding is better. But obviously, it depends. Like it's a very vague question to answer in that sense, because it really depends on the way the action is gone and कैसा किसके against खेल रहे हो और बहुत चीजें हैं. Hmm. G. What is your poker inspiration and how did you decide to become pro? My poker inspiration. I think the one guy I look up to the most, I think, in poker is Phil Galfond. He's just, I mean, everything about him is he's just the goat. I mean, I used to watch. इसका मतलब I remember 2010 या 11 में ज्यादा ट्रेनिंग साइट्स नहीं होती थी. एक ट्रेनिंग साइट थी ब्लू फायर पोकर करके, Right, I तो know this. Huh. it doesn't exist only, I think, anymore, if I'm not mistaken. So I saw a few videos of Phil Galfond there. Like, I mean, the kind of stuff he discussed over there that time was groundbreaking, but now it's like everyone knows that kind of stuff. But I used to follow him a lot. Like, he used to play high stakes and he used to post, and like, I think he's just such a good guy as well. Like, that like he's such a great coach. He's a good human being. You can see it. I even played with him once, actually, in World Series, in a 10K tournament. He was on my right, and Oh, I just couldn't. Yeah, and I just couldn't. Like, so whenever we were in a hand, and not even when we we're not in a hand, I was just literally looking at him in a stalkery way, and just I couldn't help smiling. And yeah, he's a very shy guy. He's just like, and whenever he caught me like kind of creepily looking at him, he should look away, and लोग उसकी टेबल में ले रहे थे sweetly, like obviously not in a rude way, but yeah, what a guy though, top. नाइस. अब ये हैंड Definitely देखना an खाली. inspiration. मैंने खाली मैं भी Uh, लाइक ये भी है कि मैं सीख लाइक योर ओह वाओ. He opens 2.5x, I make it 8x. I don't think so. Should have I done that? नहीं, हाँ, ये थ्री बैट नहीं करने का hand है ना ब्रो. लाइक हाँ, सिक्सेस तो कॉल करना है करेक्ट अपने को. करेक्ट. सेट या करके ही वैल्यू मिलेगा तो मतलब वो थोड़ा. हाँ, सेट में वैल्यू मिलेगा. एंड द थिंग इज, when you थ्री बैट with sixes ना, like you're making his range strong also. हम्म. तो मतलब इतना कोई वो नहीं है इसमें. लाइक सिक्सेस वगैरह आप छोटे पैसे का कॉल करो, इन पोजीशन भी हो, यू नो अगर फोर बैट आ गया तो क्या करोगे, राइट? या फोल्ड ही करना पड़ेगा. तो मतलब ये सब हैंड्स को वो नहीं करना चाहिए. लाइक बेसिकली, लाइक हाउ टू थिंक अबाउट इज, इन जनरल, जो हैंड्स कॉल की तरह अच्छा खेलते हैं उनको कॉल करो. करेक्ट ठीक है, करेक्ट just करेक्ट. use them as calls. Like these, so all these pairs up till like eights, for example, just या call them. There's no श्योर. reason to three bet them. Like you want more people in the board. You want या like to यू not गेट blow वैल्यू it right ओनली now. सेट You होएगा want, तो. हाँ. yeah, अब सेट लग गया तो आपको वैसे भी अच्छा मिलेगा. तो yeah. सही है सही है. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. Like low suited aces are good hand to three bet, for example. क्योंकि अब आप जब लो suited three bet करते हो लो suited ace को, तो क्या होएगा, आप ace 3 suited three bet करोगे यहाँ से, उसको ace 10 और ace 9 ऑफ फोल्ड करना पड़ेगा. You श्योर. know what I mean? Like थोड़े better hand फोल्ड करेगा, dominate जिसको आप कर रहे हो वो आपको dominate कर रहा है. तो जब आपका ace लगेगा तो slightly less chance, like वरना comparatively, like he has ace 8, ace 9 off, stuff like that. You know? या Hmm. एक्चुअली या फेयर इनफ. Hmm. सही है. Why are you skipping chat? Sorry, man. If I'm skipping chats, Sorry. there are too many messages. So, uh, Hmm. uh, sorry, Okay, I'll man. pick out some good questions. Yep. If you can. And if you like any question, do give them a ticket. आप ऐसे ही देख के भी अगर क्वेश्चन से कोई टिकट देना चाहो तो feel free to give one. Okay, sure. So this question by Minkle Singh
have a habit of playing very fast at tables, and when other players take time without any reason, it annoys me. Should I start using more time when I can play fast? I feel you, bro. That happens with me as well. But this is not a good thing for sure. मतलब आपको आप अपने pace पे खेलो. मतलब like don't feel obliged to play faster for whatever reason. Just take your time, man. I think that's good, and especially अगर मतलब बेकार का टाइम लेने का कोई point नहीं है. Like pre-flop usually इतने tough decisions नहीं होते हैं unless 3 bet 4 bet वगैरह टाइप का हो गया है. But फ्लॉप और प्री फ्लॉप पे तो काफी जल्दी खेल सकते हैं, बट टर्न एंड रिवर पे, स्पेशली रिवर पे, तो टाइम लेना चाहिए. लाइक आई एम आल्सो गिल्टी ऑफ दैट. आई हैव डन दैट मेनी टाइम इन द पास्ट एज वेल, कि वो मतलब क्विक एक्शन ले लो आप, एंड इट्स जस्ट स्टूपिड. लाइक यू गोटा टेक योर टाइम, एंड स्पेशली इफ द पॉट बिकम बिगर, आराम से टाइम लो और खेलो. एंड yeah, it can be annoying. I understand it can be annoying when people are playing slow, but that's just the nature of the game, man. You need to be thick-skinned, and just yeah. If basically there will be a lot of things in poker that that can irritate someone, so you just have to be thicker skin, bro. We'll give a ticket to Minkle Singh for जिसको annoy हुआ है, and because he relates to Raghav, so we'll do that. No, सही है. ये सौरभ चौहान का क्वेश्चन है, how to deal with limpers. I used to 10x with 3-5 limpers in pot with premium hands. And they still call and hit some random shit. What should I do pre-flop against such players? Make it 15x, bro. 10x नहीं 15x कर दो फिर. No, but it's good. बड़ा ही करना चाहिए open. अगर जब limpers वगैरह होते हैं, और बहुत सारे limpers हैं और कुछ भी call कर रहे हैं, तो मतलब बड़े बड़े hands के साथ बड़े बड़े bets करो. And like if you have overpairs on the flop, तो flop पे ही मोटा bet करके try to get the money in, basically. मतलब ये रेगुलर हिट नहीं होएगा ना, मतलब आपका रेगुलर ही विल नॉट क्रश, मतलब वही है. एंड इट हैपेंस विद मी आल्सो. कितनी बार वो तो रेगुलर, एंड देन यू आर जस्ट डिसअपॉइंटेड कि यार ये 3 कल की स्ट्रीम पे ही हुआ, एंड someone opens 3x, he makes it 11x, and flop पे he hits a straight eventually with 3-5 suited, and then you're like, okay, 11x 3-5 suited से क्यों कर रहा था? And I had queens or something, and no, I got stacked off like 100 bigs there, so ऐसा कुछ था, but I was like, ये क्या हो रहा है, बट ठीक है, ये कभी कार तो लगाएंगे ना वो लोग भी, तो इट्स फाइन. लाइक अगर ये बंदा 3-5 शुरू क्या कॉल कर रहा है, मतलब मोटा रेस, तो इट्स फाइन. ओ 3, हाँ, तो इट्स ओके. लाइक यू वांट दीस प्लेयर्स टू बी ऑन द टेबल. इट्स फाइन. लाइक कभी का बैड बीट्स होंगी, बट हमें जब हम पॉट जीते हैं वो हमें कभी का याद नहीं रहते. जो हमें मोटे बैड बीट्स मिलते हैं वो हमें याद रहते हैं, तो इट्स जस्ट दैट्स जस्ट अ बायस. Fair enough. Pocket 8s 46 BB jam. This time I'm folding. We can't really 46 bigs jam कर रहा है यार. अरे ये तो वही बंदा है ना जिसने एस 9 ऑफ जैम किया था. हाँ, इसके अगेंस्ट तो कॉल करना है ब्रो. मैं तो कॉल कर रहा था. मैंने तभी वहां नोट नहीं बनाया, बट 8 मेरा फेवरेट हैंड भी है. 8 is your favorite hand? It's a weird favorite hand, but yeah, I've actually made a lot of money on pocket 8s, man. मतलब मेरे काफी बार quads versus like full house हुआ है कैश गेम में, बड़े stacks के साथ. Wow. Okay. हाँ, वो एक very fishy favorite hand to have, though. Yeah. You get committed, wrongly committed. What? Like, that's not a रॉन्ग कमेंट भी हो जाते हो कभी-कभी उसके साथ, कि अगर आपका फेवरेट हैंड है और 8s, तो उसमें खाली फोकट अटक सकते हो. Yeah. Okay, do you prefer early stage registration in tournament, or at what stage do you like registering? 100%, but it depends यार. Like देखो, मेरे को I prefer playing deep. Like मैंने बहुत deep पोकर खेला है लाइफ में. Like तो मेरे को पसंद है 100 big blinds deep, 200 big blinds deep. तो इतना अगर आप deep खेलो, अगर आपके पास अगर आप दूसरे बंदे से बेटर खेलते हो, तो आपका ज्यादा बड़ा एज है. Like वो छोटे वो गंदे हैंड्स के साथ भी 200 big blinds कोई आपको देने के लिए रेडी हो रहेगा. Whereas so you can make a lot of chips for free. बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं शुरू में. तो मैं तो खेलता हूँ शुरू से, एंड आई वुड सजेस्ट अगर बंदा कंफर्टेबल नहीं है इतना डीप खेलने के लिए, तो फिर भी आप रेक कर लो. अगर आपके टाइम लिमिटेशन वगैरह नहीं है, कमिटमेंट्स कुछ और नहीं है, तो यू रजिस्टर अर्ली. डू समथिंग एल्स ऑन द साइड आल्सो. वेट फॉर गिफ्ट्स. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल गिफ्टिंग अर्ली स्टेजेस में. उनको 15,000 का स्टैक मिलता है, वो 3-4 हजार हार जाते हैं अपने स्टैक से. अब वो बंदा इज इचिंग कि यार अब या तो डबल अप या फिर रिबाय कर लेंगे. तो उन गिफ्ट्स को पिकअप करने के लिए टेबल पे होना जरूरी है. लाइक जस्ट चिल. You don't have to play that many hands. You don't have to go out of line. You don't have to do something crazy. Just chill, and you'll get gifts. Yeah, that's a nice way. हाँ, वो अच्छा था. 15,000 का 11,000 10,000 तक आ जाता है.
Yeah, so Hmm. we'll give it to Anjan Ghosh. Anjan Ghosh, congratulations. While we are trying to set with pocket deuces, but nothing there. We Yeah. just lived and yeah. There is a question by Needless about the randomizer in general. But I think, man, like just keep it simple. Like you don't need to use randomizers and stuff. Randomizers are pretty much like if you're playing like elite games, where you need to be really balanced and in a lot of ways, and people are very good at hand reading, and like it's just not required. Just don't keep it simple. Like don't get into there's a lot of complicated concepts in poker. Our job is to create simple strategies and execute them to the best of our ability. That's what we should try to do, not try to think complicated things. Nice. Uh, Hmm. uh, Ganesh Kamath has a question. What are timing tells for online poker? Any tips there? Timing tells के बारे में. And here I am. And also Right. एक सेकंड ये hand देख लो खाली 10 jack on the Yeah. button. Open 3x है. Hmm. Just calling. I, Like ये 3 bet करने लायक था कि नहीं था? नहीं, right? This is a call is fine out here to play. I mean, probably it's fine. If the players are weak, then it's okay. But I think you should just fold though, in general. I thought I was Yeah. on the button and this thing तो मैंने Hmm. वहाँ थोड़ा. It's fine to call. It's fine. It's okay. It's okay. It's not the end of the world. It's fine. Sure. Okay, sorry. Timing tells in poker, if any, in online. Hmm. Right. Yeah, for sure. There are time intervals. I think लाइक लाइव में भी काफी टाइम इंटर्वल्स मैं तो यूज करता हूँ और काफी यूज किया है मैंने लाइफ में ऑनलाइन भी काफी टाइम इंटर्वल्स होते हैं ऑनलाइन में टाइम इंटर्वल्स आर स्लाइटली डिफरेंट ऑब्वियसली तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और लोगों को कि क्योंकि सबके स्पेसिफिक थोड़े टाइम इंटर्वल्स होते हैं लाइक सम पीपल आर डिफरेंट some people can be doing different things but I think one major one which I think works अगर आपको दिख रहा है कोई बंदा है टेबल पे जो टिल्ट कर रहा है जो हार रहा है जो अच्छा नहीं खेल रहा है तो ही इज लिटिल एजी तो उन सिचुएशंस में दे आर लाइकली टू मेक अ ब्लंडर बाय जस्ट गोइंग ऑल इन वेरी क्विकली ये सबसे बिगेस्ट टाइम इंटेल है मेरे को जो लगता है फॉर एग्जाम्पल आप थ्री बैट करे जा रहे हो उस बंदे को वो इरिटेट हो चुका है ठीक है अब वो आपकी थ्री बैट कॉल करता है और आपने ही चेक्स ऑन द फ्लॉप आपने बैट किया नहीं ही जस्ट गोज ऑल इन हाँ. like just like quickly he just goes all in those are very like for example in this situation like it's very likely that he doesn't have a very strong hand like he might have like top pair he might have like eights on a jack high board I'm talking about weak players obviously I'm not talking about good players over here obviously right um so like the quick jam in a situation when he should really be taking his time and thinking कि क्या करना चाहिए मुझे इतना easy decision नहीं होना चाहिए जो Correct. वो all in कर रहा है instantly जो act कर रहा है वो either with his value or with a bluff. It should not be that easy. Like you know what I mean? So you have to deduce. Like sometimes quick all in is can mean strength also. Sometimes quick all in can mean weakness also. But it's important to not like use this as a reason to make a decision unless you're relatively sure about it. Like it's very easy sometimes in poker कि आपने एक गलती कर दी कोई या आपको बस रीजन ढूंढ रहे हो आपको मन है कॉल करने का उसको रिवर पे ठीक है आप रीजन ढूंढ रहे हो अरे ये मेरे को लग रहा है कि ये हुआ था तो मैं हाँ. करता हूँ कॉल लाइक ये लो पीपल आर जस्ट जस्टिफाइंग इट इन द हेड्स कि उनको कॉल करने का मन है तो वो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ रहे हैं कॉल करने के लिए Got it. ऐसे नहीं करना है अपने को लाइक थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा दीज आर टेल्स बेसिकली विच यू ऑब्जर्व ओवर टाइम एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम सो लाइक वन थिंग आई लाइक टू डू इज अगर आपने कोई नोटिस किया फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में हाँ. राइट समझ लो टाइम इन टेल्स बाद आपने कुछ नोटिस किया तो आप एक काम करो आप नोट्स खोलो उस बंदे के ऊपर एंड राइट डाउन व्हाट यू नोटिस इन शॉर्ट एंड देन पुट वन क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट one question mark means this is a tag system which I use and I'm sure other players do as well. The one question mark signals कि मैंने एक बार notice किया है इसको ये Sure. चीज करते हुए ठीक है और that doesn't have to be time interval also it can be anything एक बार मैंने notice किया कि एक बार इसने ये चीज की है ठीक है अब आप next time खेलो उसके बाद थोड़ा टाइम बाद उसी टेबल पे आपने वापस नोटिस किया अब आप एक और क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो तो जितने ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स आएंगे आपके You're sure. उतना ज्यादा रिलायबल आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन Correct. समटाइम्स क्या होता है आप कभी का कोई नोट ले लेते हो और इट कुड जस्ट बी कि इन द मोमेंट उसने एक रैंडमली ऐसे कर दिया एक बार पर वो ऐसे यूजुअली करता नहीं है तो दैट कुड बी मिसलीडिंग नोट फॉर यू इन द फ्यूचर तो आपको थोड़ा सा आपको बेसिकली
weight assign करना है basically. चलो कितना showroom है इस situation के बारे में, you know. I Yeah. like, yeah, very, I think a very important this thing कि note taking में भी मतलब कैसे करना है, ये काफी बढ़िया वो है. Okay, The nice. question mark is a good thing to do. Yeah, question mark is something new, man. And for me, like I've heard this for the first time, and मजा आया सुन के. Yeah, that's good. Nice. What I have a question. Muhammad Yeah, Nazim? Okay. हम ये थोड़ा वो है, टेक्निकल है, बट हाउ मेनी ब्लफ्स डू आई नीड टू रेज सो माय रेंज विल बी बैलेंस्ड? इसका मतलब ही पूरा समझा दो ना यार, प्लीज. भाई ये out of syllabus समझो इसको, ये सब बस इतना just be like you know, like think simple, man. Like in poker is actually easy game to play if you just make it simple. Don't Nice. get too complicated. People are not playing like high stakes, you know, like just keep it simple. When you make hands, try to get value, find good spots to bluff, keep it simple. Like don't get, there's too many concepts in poker to overwhelm yourself with. It's just not worth Sure. it. You know? Nice, nice. That's I think a nice way to put it कि भाई ज्यादा मत इतना वैसे करो. बहुत है क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है यार पोकर में, इतना कंटेंट है, इतने इतने Situations है, yeah. theories है, इतनी सिचुएशन है, बहुत चीजें हैं, and I'm not saying they're not good to read about, yeah sure, but like you gotta be able to, there's way more things which are way more important Yeah. before you get to that level, and it's much more important to build good fundamentals before you know, like yeah. Okay, this guy opens 2x, I 3 betted to 6x, and with ace jack off and optimistic calls, this guy jams 28 bigs now. We fold. ये क्या हुआ था सामने, इसने इसने he 2x ओपन opened, किया, मैंने 6x किया ace jack off के साथ. Optimistic calls 6x, and this guy jams. yeah Now I can't right. because I had behind this guy left. Yeah, so you know bro, so I'll जल्दी हो, so इसके पास 30 पिक्स थे ना हाँ, बंदे के जिसने ओपन किया, तो इसके अगेंस्ट आप कॉल कर सकते हो बिकॉज 30 पिक्स में क्या है कि वो स्टैक ऐसा है कि वो जैम कर सकता है, कर सकता है, yeah. right? Yeah, so in these situations versus easy players, I would just call in that situation because वो jam करेगा तो it is wasting his jack in that sense, you know. Sure. I mean, you can 3-bet fold, that's fine. There's nothing wrong in that. But personally, what I would do in this situation is, like, I want to be in situations when I'm in position against players and I have a chance to win, like, more pots. Like, you know, like, just play better than him. Because you have to understand that, like, out of position is way tougher to play. Even in theory. Even in theory, it's very difficult to play out of position. So even a lot of very good players will get it not very right, you know. तो Got it. आप इमेजिन करो जब वीकर प्लेयर्स होंगे वो उनके में से कितने ज्यादा और बड़े होंगे, Correct. you know. Yeah. तो अगर इस स्पॉट Got में it. 100 भी होता है उसकी बात है, इट्स फाइन टू 3 bet, बट 30 बिग ब्लाइंड है तो वो जाम कर सकता है, तो हमें जाम अवॉइड करना है, तो हम बेटर गेम कॉल करके खेले. Noted. Understood. यहाँ अपन ने लाइन लिए 9-10 jack, we don't hit. We had an open and an 8 and a king. I was trying to get the 10 there. I give up. ये हुआ क्या था इस हार में? Oh wow. Okay, he was playing on the flush draw. 9-10 queen. I had a jack, so I had No, and you he. was it limp pot? Was it a limp pot? No, it wasn't a limp pot. नहीं, I think it was a limp pot. एक second ना, मैं jack 7. Yeah, limp pot था. Okay, तो क्या हुआ फ्लॉप पे? Flop पे check 9-10 queen. I have jack 7. Yeah. So हाँ. I check. This guy makes it 4x into about whatever जो pot था, and I call because he put 400 in a 350 pot. I just call. I have an open ender. Flop turn is a 10 again, so 9-10 queen 10 again. And yeah, he puts 800 in a 1150 pot, and we re-raise it to 2200. Not needed, bro. I think, you know, you can even, honestly, you can just fold flop also because he's overbetting the flop and like you're unlikely to get much money now when you hit your straight. You know, बहुत obvious वाला वो hand है ना. Sure. So I mean, it's okay to call. Obviously, it's fine. But like I'm just saying, like, yeah, in a limp pot, we don't need to lose that much in this situation. Also, he could like there's a flush draw as well. He's betting pretty big on that board. You're also out of position. You know, not in very good situations for us. Turn पे break आएगा a lot of times. आपको check fold करना पड़ेगा. समझा, You know. समझा. Yeah. Okay. I'm going to post one. ये करने वाला हूँ.
ये काफी सही लगा मुझे क्वेश्चन कि I have jacks on hijack in 6 max. Okay, I have pocket jacks. नहीं ये मेरे अपने हैंड में जो आया हुआ है ना पहले लोगों अच्छा ने अच्छा, पूछा है हाँ. राइट राइट I राइट. have jacks on hijack in 6 max. I open 3x big blind calls. Flop is ace 7 2 rainbow and he bets 4 BB. Okay. I call. तो ace 7 2 है मेरे पास जैक्स है उसने 4 bigs bet किया in a probably 6 7 big spot and I call. He bet down turn पे he bets 12 BB. उसने क्या कार्ड है वो लिखा नहीं है and jams on river and I call and I win. Not sure why he can't have ace there in his range. मतलब नहीं था उसके पास ace, but probably he was bluffing or something. But he's saying I don't know what. Like मैंने क्यों किया and it just happened types. I mean, people, like some people just play weird, like, so can't really like know this in a vacuum. Like usually ऐसे नहीं खेलना चाहिए उसको. मतलब एसआई बोर्ड है उसको चेक करना चाहिए क्योंकि आपके पास रेंज एडवांटेज है वहां पे, Correct. क्योंकि आपके पास बेटर एक्सेस होंगे वहां पे, आपके के भी होंगे, आपका एस किंग भी होएगा, वो सब चीजें होंगी, तो इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए. तो इट इज डिफिकल्ट टू आंसर अ क्वेश्चन वेयर अ पर्सन हैज जस्ट डिसाइड टू रैंडमली प्ले समथिंग, You should not waste your time on thinking about this stuff. Random चीजें करते हैं लोग. Those things are fine. You have to concentrate on what we can do well. Noted. Nice. Arjun, Arjun has asked how to make best use of suck out equity. Shout out to Arjun Singh How to Chanda as make well. You just how won. to make best use of suck. Yeah. I mean, you live with Rocky, Arjun, so I mean, you have a lot of suck out equity. That home has a lot of suck out equity, I think. Okay, good question by Akash Arora. Yeah. I will also give him a ticket for this. I like Right. Raghav. You have to approve. Okay, grinding more tables for volume, playing less focused versus grinding lesser number of tables, playing with better focus. What should be the approach of an intermediate poker player? Because volume के चक्कर में मैं कभी ज्यादा खेल लेता हूँ, focus No, नहीं. no, so definitely the second one. Playing lesser tables and playing with more focus. Like basically, सिर्फ उनको tables add करने चाहिए जो थोड़ा ज्यादा comfortable हो चुके हैं in the way they play. They are more comfortable with the game. Then they should add tables. Adding a lot of tables in the beginning is just a bad idea because then you stunt your growth. क्योंकि क्या होता है ना, फिर आप autopilot पे खेल रहे होते हो. तो Correct. कम tables खेलो, focus करो. आप कितने tables खेलते हो? Yeah, it depends. अब मैं cash games खेल रहा हूँ तो अब मैं कम tables खेल रहा हूँ. मैं max 4 tables खेल रहा हूँ. Oh, nice. Also because I'm not super experienced at PLO5. So three, 4 tables max. I'm playing because I'm trying to get better also. But in the past, I have played a lot more tables. And even there have been situations on Sundays when there's too many good tournaments going on. So मैंने बहुत tables लगा ली हैं और sit out हो रहा हूँ और like समझ नहीं आ रहा और like it's just panic mode for like a while, till you bust some tables. So it's definitely not a good idea. Come tables खेलो, enjoy it, like watch the action, like let your brain like do the thinking and like that's how you're gonna improve. नहीं तो you cannot observe only, right? आप observe कर ही नहीं पाओ ना, मतलब क्या हाँ, चल कैसे रहा है, करोगे? players में क्या हो नहीं रहा कर है, कौन पाओगे. कैसे खेल रहा है, it's so hard. Right. Okay. Rajat Bansal has a question. During multiple tables, I miss to observe table action. Okay, just what we spoke of. This is nice. Do we totally rely on player stat during multiple table or more observation is also required? I mean, obviously observation is good ना. अगर आपने देखे हैं कि कोई अजीब से hands खेले हैं किसी ने, तो then that's a good thing that you have noticed. If you're playing too many tables, अगर आप notice नहीं करे तो आप वो miss कर दोगे. And that information will be way more crucial than seeing some stat. Because a lot of people you may not even have a lot of stats on ना. और आपके लोग और ऐसे लोग हैं जिनके आपके बहुत stats हैं, so they are most likely not very bad at poker. They're probably like playing a lot, so they're probably decent at poker, right? तो ऑब्जर्व करना आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टेबल पे अगर आप समझ लो टूर्नामेंट खेल रहे हो तो हर एक टेबल पे 2-3 रिक्रिएशन प्लेयर्स होंगे इन जनरल, तो उनके पास आपके ज्यादा स्टार्ट्स भी नहीं होंगे, तो अब उनके अगर आप एक दो हैंड देखोगे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में, तो आप जिस रेट से आप उनको बीट कर सकते हो फिर that's way higher than what you would get to know just by looking at stats. If you just see some hands that they've played badly. Yeah. Tilting issue. Okay, how do you keep ego in check? Because tilting issues तो होते रहते हैं, तो ये like do you also like आपने भी कुछ meditation या कुछ ऐसा किया है?
नहीं ब्रो, मैं खुद बहुत टिल्ट करता हूँ. मैंने अभी लास्ट 1-2 साल से तो बहुत टिल्ट हुआ मे बी टेबल्स पे. एंड it's so maybe it's a little hypocritical of me to answer this, but yeah, I mean, sorry, what was the question again? How not to tilt? How do you manage your this? क्या करना है? कैसे manage करूँ? How do I keep ego in check? Ego in check. I mean, it's a tough one, man. Like, I think I have to understand that it's just a game at the end of the day. You're just playing against another player. It's not personal. Like, that's, I think it's important to distinguish and realize that it's not a personal game. They are just playing poker. You are playing poker as well. They might be playing on ego, but it's important that if someone else is playing on ego, you should take that as a good thing and be stoic, be a bit more calm, and try to take advantage of the fact that someone is playing on ego versus you. You know, Yeah. Two Easier said checks. than done, obviously. Sorry, But, I cut you there. हाँ, Turn पे check किया जब flush आ गया, like and हम्म, river पे भी that guy checks. We are in position and I go for value bet here. He makes it 11.5. I put 4.3 in 11 big spot. He makes it 12 bigs here. Uh, हम्म, After two checks, which is he was probably waiting for me to do this. I'm calling it off, but I think we should have not. Yeah. thin value bet by him. Value is. Showdown लेना चाहिए था उधर with Jack. Huh? With the Jack of spades there. See, Showdown. sorry, I was talking. I didn't follow the action. What was the flop in the turn, नहीं नहीं actually? चले you please talk. उतना Uh, इतना नहीं है कुछ हाँ sorry. yeah. I hope you guys have made accounts on Pocket 52, guys. You guys should check out the action. There's a lot of good cash action, and even tournaments nowadays. It's like the guarantees are increasing every day, so must check it out. Uh, do you play Zoom or Rapid Tables? Someone's asking that do you play Zoom or Rapid Tables? I played them a lot, but a while back, long time back. अभी तो ज़्यादा action है नहीं, I think कोई side पे Zoom का, आपको right? मजा आता था लेकिन you like it? हाँ, it's fun. उसमें it's actually better for recreational players also, I think. हाँ तो इसमें क्या है ना कि वो पेशेंस जिसमें कम होता है, तो उसको हाँ वेट करने में फिर होता है कि यार हैंड खेलो तो कुछ तो खेलो, बहुत टाइम से फोल्ड कर रहा हूँ. जूम टेबल में क्या है, यू कैन जस्ट कीप फोल्डिंग अगर अच्छा hand नहीं है, एंड यू कैन प्ले मोर हैंड. सो आई थिंक इट्स अ फन फॉर्मेट. Yeah. Okay, this is a question. To trap or take down a pot, क्या करना चाहिए? Because trap करने के चक्कर में काफी बार फंस जाते हैं. So do you want to should you be trapping moreover के cash games में? Because also this is again I'm just adding my personal touch कि जब आप बहुत trap करने जाते हो and then you find yourself कि river तक you are now behind. So हाँ, what do you see? How do you see it? Like मतलब देखो, आप ट्रैप करोगे तो देयर विल बी सम सिचुएशन ना कि उनका हैंड लग जाएगा, वो तो होएगा ही. समझ लो कोई आप ट्रैप भी कर रहे हो, उसके पास कुछ भी ड्रॉ है, टर्न पे भी ड्रॉ है, उसके पास फ्लश ड्रॉ है, समझ लो तो अराउंड 15% टाइम वो लगाएगा अपना रिवर पे फ्लश ना, तो वो तो होएगा. बट एटलीस्ट द अदर टाइम्स यू विल विन द पॉट. नॉट दैट आई एम सेइंग इट्स करेक्ट इन ऑल सिचुएशंस, आई एम नॉट सेइंग दैट. देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर ट्रैपिंग इज गुड, सर्टेन सिचुएशंस वेयर इट्स नॉट गुड. फॉर एग्जांपल, ट्रैपिंग is better against people who are aggressive, who bluff a lot, जो मोटी बेट्स करते हैं, जो ब्लफ भी ज्यादा करते हैं, और उनका जब हैंड होता है तब भी वो मोटी बेट करते हैं, तो उनके अगेंस्ट ट्रैप करना बहुत अच्छा है. बट इन जनरल आई वुड नॉट सजेस्ट टू बी एज ट्रैपी इन जनरल. लाइक आई थिंक दिस इज अ बिग मिस्टेक. okay जो बहुत रिक्रिएशनल प्लेयर्स और जो मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. दिस इज एक्चुअली लाइक मिस्टेक वेयर पीपल लूज सो मच मनी, क्योंकि वो फैंसी खेलने की कोशिश करेंगे, ट्रैप करेंगे. नो, जस्ट प्ले सिंपल मैन. हैंड लगाओ, मोटे बैट करो, उनको कॉल करने दो. दैट इज द बेस्ट वे टू प्ले इन मोस्ट सिचुएशंस, यू नो. nice Yeah, of course, if you have like top set on with aces, ace 5 deuce aa gaya board, or like something like that, yeah, fair enough, you can slow play then. But in general, look to bet yourself, look to okay get value. Yeah. nice But penguin. hmm, Sorry. I yeah. open 3x. He makes it 9 bigs on the big All blind. right, let's go see a flop. Let's go. We said it. यहाँ तो बहुत ट्रैप ही लगेगा अगर मैं बेट कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. अब जस्ट चेक लाइक आई मीन वो लगेगा ही कि आई डोंट हैव इट नाउ. वी गॉट समथिंग एंड नाउ he'll show probably it'll be interesting. Oh my god.
I'll have to let go. That's strange, man. Yeah, I think it's fine. Like it's Yeah, right. Because the river will get weird. even more difficult It's right by the fine. river. Yeah, I think it'll It's, become very it's difficult. very strange, but I probably just hit the jack to be honest. Hmm. What is the issue, Kurana? What is the impact of GST coming in poker in October? What is your thoughts now? Is there you managed everything? Um, yeah. So unfortunately, this is something which is really shitty that is happening in the GST, but um, it might come in October. It might get delayed as well. Talks are still ongoing, from whatever I know. तो अभी sure नहीं है, but हाँ, of course, impact तो होएगा GST का. I think some sites might die as well, but the bigger sites will still survive, and like they are finding ways to counteract the GST and still provide a good platform for people to play. So yeah, but it sucks, man. Of course, I hope they change that soon enough. आपके आई थिंक सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर देयर, वो लोग काफी ज्यादा मस्ती भी कर रहे हैं चैट में कि Yeah, मैं, ब्लॉन्ड और ब्रूनेट पूछ रहे हैं और ये सब को है तो या yeah, okay. I mean, that last one of these questions, I'm definitely not answering, and uh, okay, this is a good one. How to approach multi-way pots? Sorry, this is ये सब पहले से hmm, लोगों ने किए हुए, तो we'll answer those. How to approach multi-way pots and situation भी दिया है. If I hit top pair हाँ, and I am out of position in a 12 big spot, hmm, what should my bet sizing be? If in a 12 big spot I'm out of position and suppose three people are playing, I hit hmm. top pair, तो मुझे कैसे खेलना चाहिए, इसको अप्रोच कैसे करना है मल्टीवे में? Should I, so basically is it bet big or bet small? Like 12 bigs में how much would you bet if three people are Yeah, playing? डिपेंड करता है ना, जैसे क्या बोर्ड है. अगर अ, बहुत सारे ड्रॉज है तो आप बड़ा बेट कर लो, राइट. अगर बहुत ड्राई बोर्ड है, जैक 5 डूस है आपके और आपके पास एस जैक है, तो यू कैन बेट अ लिटिल स्मॉलर आल्सो, राइट. Okay, okay. या हाँ, डिपेंड, मतलब आपको इन जनरल आपको ऐसे हो सकते हो कि अगर आपको आपके हैंड को प्रोटेक्शन बहुत चाहिए, बहुत गंदे गंदे टर्न कार्ड आ सकते हैं आपके लिए, तो उन सिचुएशंस में आपको बड़ा बेट करना बेटर है, क्योंकि आप चाहते हो कि इसी से फॉर एग्जांपल 9 हाई फ्लॉप है, ठीक है, आपके पास एस 9 है, got it. राइट, और दो और लोग हैं फ्लॉप फ्लॉप पे. तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं लोगे तो आपको टर्न और रिवर पे वैल्यू ना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन जनरल, बिकॉज टर्न पे ओवर कार्ड आएगा, 10 आता है, जैक आता है, क्वीन किंग एस, आई मीन चलो एस अपना 2 पे हो जाएगा, बट काफी सारे कार्ड आते हैं जिससे अपने खुद वैल्यू बेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने खुद श्योर नहीं होंगे कि अपन लाइक कहाँ पे है, लाइक अपना हैंड कितना स्ट्रांग है. तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो मोटा बेट करो, क्योंकि उस टाइम क्या है कि अठियां सत्तियां सिक्सेस ऑल दीज हैंड्स विल पे यू दैट वन स्ट्रीट फॉर श्योर. A week or 9 will pay you that one street for sure. So you must make sure कि उस स्ट्रीट को आप लाइक फ्लॉप पे अगर एस नाइन आपके 9 बोर्ड पे, तो आप एक मोटिवेट करो, कम से कम वो तो आपके हैंड में आ जाए, एंड उसके आपका उसका रेंज भी थोड़ा इजीली डिफाइन हो जाएगा. फिर क्या क्या हैंड है उसका रैंडमली क्वीन जैक नहीं होगा वहां पे, फिर तो अब Sure. क्वीन भी आएगा टर्न पे, तो इट्स अ सेफ कार्ड फॉर यू एक्चुअली. इट्स नॉट दैट बैड अ कार्ड, वेयर इफ यू बैट रियली स्मॉल, तो अगर आप क्वीन आएगा टर्न पे, तो अब आप उसका क्वीन भी होता है, एस क्वीन होता है, किंग क्वीन होता है, सब चीजें हो सकती है उसके पास. व्हाट आई मीन. तो दोनों चीजों का फायदा है, बट मेन रीजन है कि जब भी आपके हैंड को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप बड़ा बेट करो. बट ज्यादा प्रोटेक्शन आई डोंट मीन कि 3 डायमंड्स आ गए हैं बोर्ड पे, ठीक है, टर्न पे आपके टॉप पेयर है, अब आप मोटी मोटी बेट करो. नो नो नो, दैट्स नॉट गोना बी गुड आइडिया. दैट इज नॉट व्हाट प्रोटेक्शन इज ऑन द फ्लॉप. ज्यादा ड्रॉज नहीं आए हैं, मतलब इट्स स्टिल लाइक रिलेटिवली एस 9 इज गोना बी अ वेरी वेरी गुड हैंड ऑन अ 9 हाई बोर्ड. सो ऑन दो सिचुएशंस, बट आई थिंक पीपल मेक द मिस्टेक कि वो एसेस है उनके पास, अब दो और लोगों ने कॉल कर दिया फ्लॉप पे, अब टर्न पे फ्लश भी आ गया है और एसेस है उनके पास, अब वो मोटी मोटी बैट कर रहे हैं कि एक और डायमंड ना खुल जाए. दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि मोस्ट लाइकली इनमें से कोई ऑलरेडी आपको बीट कर रहा है, और अगर आप बैट भी करोगे तो ज्यादा आपको वैल्यू नहीं देंगे वो लोग. Got it. Nice. हम्म, हम्म, Monotone boards with a premium hand. Okay, so there's a monotone board. I have a premium हम्म, hand and no flush draw. तो मेरा फ्लश ड्रॉ तो नहीं हो सकता. सो लाइक आई मीन
तो मेरा फ्लश नहीं लग सकता. हाउ टू प्ले? पॉट कंट्रोल करूं या सी बेट करूं? डिपेंड करता है. अगर बहुत छोटे स्टैक्स हैं, आपके ओवर पेयर है, छोटे, आप समझ लो टूर्नामेंट खेल रहे हो आप पॉट में 7-8 बिग ब्लाइंड हो चुके हैं, यू नो, यू हैव लाइक 10 BB and it's a monotone board, you have aces, kings, whatever, you can just go all in. But of course, when you're playing in a cash game, you have 100 big blinds, you must be very careful. So it's just a good rule of thumb is कि अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब सारे स्ट्रीट्स पे वैल्यू नहीं ले सकते इस बंदे से, तो इट्स बेटर टू चेक इन वन ऑफ द अर्लियर स्ट्रीट्स ओनली, यू नो, कि वरना आप शुरू में ही पैसे डालना चालू करोगे, किसी का फ्लश होगा तो he'll win a lot of money for you. So just better to be a little passive on these boards when you have such kind of hand. Cannot go berserk just कि एक फ्लश ना आ जाए बस, हाँ उसकी हाँ वजह से मैं पूरा स्टैक डाल दूं अपना. करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट. गलत thinking है. So yeah, these are also some probably stack of ways in cash games, you know, कि आप हो जाते हो, and then if someone जैसे गुरपाल नंदा says hello Right. बंसी भाई, and हाय गोपाल, क्या हो रहा है भाई? GH Credito is Raghav bro, आप हिंदी में बात कर सकते हो प्लीज. हाँ, सॉरी, मैं और हिंदी में बात करूंगा अब. हाँ. Okay, Gaurav Sinha, I like the question, यार, अगर आपको अच्छा लगे बताना. He says, how and when should you increase your cash table blinds? Like every time I increase my cash table blinds, there are totally different players, of course, and the same gameplay does not work. So how to manage that? I hope आप स्टेक कर रहे हो. हाँ, मतलब normally. क्या I hope मतलब ऐसे ही ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं, like not ऐसे ही randomly बड़े टेबल से बैठ रहे हैं. हाँ, एक तो ऑब्वियसली तो जीत के करो तो बेटर रहेगा. हाँ वही. ऐसी मत स्टेक्स मूव अप करो, बट वो डिपेंड करता है, हर टेबल डिफरेंट होती है, लाइक नो, वो स्टेक्स के ऊपर नहीं है सिर्फ. हर टेबल में सब लोग डिफरेंट खेलते हैं. मतलब देयर आर पीपल जो 100-200 खेल रहे होते हैं ब्लाइंड्स, और वो 20 या 50 के प्लेयर्स से और गंदा खेलते हैं, ऐसा भी होता है, यू नो. तो इट जस्ट डिपेंड्स, लाइक ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है. Okay, this hand I open 3x. Lengthy on the big blind calls my open, and board is this thing. We've got ace king, and he puts in one blind. I'm of course going to. I'm raising this, but when he does this, does he do this usually with a flush draw there with ace of with hearts and to just to see a card? Is that what do you put on it? Like hand के बाद बता सकते हो, but हाँ. हाँ, हैंड के बाद आई गेस बताता हूँ ना. ये तो यार. Wow, he calls, man. That's interesting. Yeah, he checks, probably a missed flush draw. So he puts 4 bigs on the turn. I make it 22 blinds, and he calls that also. And now misses a flush. Straights get there. So, but could he be on the big blind calling with 5-8? Hopefully not. Two pairs are there in this thing, and but we also want to take value. तो कैसे किया जाए? Let's go, man. Wow. Okay, so did he call? Yeah, he called 30 bigs. Nice. You should raise bigger on the flop. So when he bets 1 BB, right, there's no need to think too deep कि क्या हो सकता है उसके पास. You just treat, like someone leads out 1 big blind, just treat it as a check. हाँ. It's the same as a check. Just like it doesn't matter. Just treat it as a check. And I would, in fact, like with ace king here, if these are spots where you need to try to stack the guy, you need to try to take all his chips. Okay. तो मैं तो मोटा ही रेस करता फ्लॉप पे, और टर्न पे भी मोटा रेस करता कि मैं रिवर पे जाम कर सकूं और सारे पैसे मिल सके उसके. हाँ. But उसने जब like you know basically ये था, उसने 1 BB किया तो I made it 5 bigs. When he made it 4.5, I made it 22. So somewhere यहाँ like आप बड़ा तो कर रहे हो because pot size भी उतना ही था, you know. So आपको उससे भी ज्यादा करना था, लेकिन मतलब फ्लॉप पे मैं और करता बड़ा. बेसिकली जो फ्लॉप पे थोड़े और डाल दो ना, तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होके यू आर एबल टू, हाँ, रिवर तक आ जाता. ये गोल होना चाहिए. मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट कि मेरे को सारे चाहिए उसके हैंड में, लेकिन जब अच्छा हैंड होता है. Got it. ये इसमें उसका जो डर होता है कि वो like you know he'll leave, like I won't get him on the pot. उसका क्या करना, मतलब if he like probably doesn't play the hand, that's okay.
Like he'll probably fold. What do you do? But you can't know all these things. Nah, you can't know these things, Sure, right? of course. You have to just, yeah, you can't know these things. So अपने को जो अपने अच्छा hand है, we want to get value, so we just try to play it like that. We can't predict what he's gonna do. Congratulations, Gaurav Sinha, for that question. We are going to give you something. Can you, Aki asks, can you describe a reality of being a professional poker player that you think other people are not aware of? I mean, I think people who don't play poker, I think they don't understand the how tough it is to be a professional poker player. You know, I think it seems more rosy on the outside, and people don't realize how much work goes in and how much like how much of a strong mindset you need to play poker well, and how your mood goes up and down, and then like yeah, I mean we have to play. We play a lot of times at night, so that's when people are usually chilling and not like because they finished their work day. So you know, there's a lot of things which we do very differently, which I think people can't quite grasp if they're not really a poker player. You know, yeah, I think from the outside it seems like, oh my god, they think we're Dan Bilzerian, you know, which we're obviously not. That's the image that people get, I think. Okay. Malik साहब says भाई कंट्रोल कैसे लाए प्लीज बताओ यार. एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम कैश गेम्स में काफी ज्यादा परसिस्ट Yeah, करता है. कंट्रोल कैसे लाए इज लाइक आई मीन control. I mean, this is just a personal thing, I guess. Everyone's different, you know. But I think just meditation would help, man. Hmm. Hmm. दिस And गाइस. I guess you know एक काम करो आपको लगता है कि कभी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप कॉल कर रहे हो आपको लग रहा है कि कॉल नहीं करना चाहिए मुझे फिर भी कर रहे हो तो उन सिचुएशंस में आई थिंक जस्ट अ गुड थिंग आई रेड लाइक अनिल लेग्रानो ने बहुत टाइम पहले कहा था मुझे याद है मैंने मुस्कान के पॉडकास्ट में भी इसका नाम बोला था कि अगर आप इस सिचुएशन में काफी अपने आप को फाइंड करते हो कि मतलब आपका ब्रेन कुछ और बोल रहा है आपको आप फिर भी कुछ और कर रहे हो यू नो इन दो सिचुएशन जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट breathe a couple of times, you know, or just count to three. And then you can kind of reset your thought process at that time. So थोड़ा उस टाइम शायद थोड़ा और कंट्रोल आ सकता है just a small little hack आप ट्राई कर सकते हो नहीं नाइस है. Hmm. Probably just close your eyes Hmm. and breathe and 2 times Yeah, and just थोड़ा yeah, reassess just करो. focus it. Yeah, yeah. Okay, how much rake back do we get if we grind on pocket 52? चलो एक promotional question आ चुका है. Give पॉकेट us that 15. ticket. हाँ ये अजय मणिकंता देखो भाई ये पॉकेट 15 में से नहीं है. Yeah, but I mean that you get up to 60% rake back, bro. By Hmm. the royalty rewards and आप जैसे levels increase करते हो and there are more this thing coming in. तो yes, आप stay tuned for that. Yeah. अक्टूबर से और cash heavy होगा, so you will see a lot of interesting stuff coming in. And Hmm. do ask good questions. You're going to win 500 रुपए का cash tickets, तो वो भी ले लो यार. काफी लोगों के पास है, अच्छे questions पूछो. Raghav should be happy, that's all. And yeah, you're winning tickets. AI is progressing very fast. Do you think it will affect poker? What's your take? Are you like a, मैंने आपको tech question पूछा था पहले कि are you more of a Hmm. ये है? What do you think? AI का I'm a कुछ start. I mean, I think AI is quite dangerous to be honest. I think AI की वजह से poker का तो अभी बात करते हैं, but I think a lot of jobs in the world will get replaced by AI. That's quite a scary thing in general. I think. I mean, of course, it's not good for poker either. Because, I mean, there's already obviously lot of softwares out there, you know, and there's machines capable of playing well. So that's a general fight that poker must always fight. And you know, big sites spend a lot of money on making sure that the game integrity is good. So probably do I know because I speak to the team a lot. Like we try to keep like whatever complaints we get and stuff. Like you know, we try to make sure that the site is clean and there's nothing shady going on. Yeah. okay? Uh, okay, what is a normal swing in 1025 and 2550 stakes? I mean, कोई भी stake पे आपको क्या लगता है कि कोई भी what is a good amount of binds जो swing होती रहती है तो ठीक है normal है like आप ज्यादा assess मत करो हम्म, उसको. देखो अगर मतलब स्मॉलर स्टेक्स खेल रहे हो तो यूजुअली लोग थोड़ा गंदा खेलेंगे तो हाँ आपको
40 binds तो होने चाहिए, I would say 40 binds होने चाहिए, even though 40 is little on the aggressive side, 40 binds is fine. But अगर आप थोड़ा हाई वेरिएंस वाला गेम खेल रहे हो, PLO5 खेल रहे हो अगर आप फॉर एग्जांपल, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस है. शॉर्ट रन में लक विल प्ले अ पार्ट, तो उसमें आपको बेसिकली थोड़े और बाइंड रखने हैं कि आप उस वेरिएंस को सोक अप कर सको, कि अगर थोड़ा सा अनलकी भी हो आप काफी काफी बार, तो फिर भी आपका बैंक को इतना इफेक्ट नहीं हो. तो जितना ज्यादा रिस्की गेम खेल रहे हो उतना ज्यादा आपको बाइंड रखने हैं कि आपका रिस्क कम रहे. Yeah, so I would suggest 50 binds is a good benchmark, I would say, like, you know. Uh, Ganesh Kamath says ICM spot. Sorry, मैं आपको questions पूछते जा रहा हूँ. Like you feel हाँ, free to see. बोलो. हाँ. Easy नहीं है. Yeah. 3 players left MTT में. Chip leader has 29 BB. We are second with 15 BB. Third player has 11 BB. Small blind versus big blind. We had big blind. Chip leader jams on us. Do we call with queen off or fold? पैसे कितने हैं वो भी important है, but still like आपके पास किंग क्वीन ऑफ है, चिप लीडर ने आप पे जैम किया है, आपके पास 15 ब्लाइंड्स है, तो आपको कॉल ऑफ करना है कि नहीं करना है, स्मॉल ब्लाइंड वर्सेस बिग ब्लाइंड में. Right. मैं तो call कर देता. I mean, it depends. If the chip leader is crazy, then I would just call it off because, I mean, if we have what? We have 15, right? Yeah, we have 15, third is 11, and Yeah. chip leader is 29. So if you win the pot, I you're mean, winning. it depends on the payouts. Depends on the payouts also. Yeah. Like but like in general, I would call because we are going to be even though ICM wise maybe we should not call, but I would call because if we call and we win, we probably just win the tournament because then we can apply pressure on the other two guys. You know, we'll have 30 big blind. This other guy will have 15. So I always would take the aggressive line. It may not be correct, but I would do that. Okay, perfect. Yeah, I think हाँ सही है. एक अच्छा क्वेश्चन है, दो अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बहुत आई थिंक इट्स मोर फॉर द बिगिनर्स एंड द लाइक यू नो जो हम लोग के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड है. सम टिप्स अबाउट व्हेन वी हैव अ गुड हैंड बट वो बोर्ड को हिट नहीं करता, हाउ डू यू डील विद दैट फ्रस्ट्रेशन. एंड यू नो आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस स्ट्रीम्स जब व्हेन इट्स गोइंग गुड इट्स गोइंग ग्रेट, लाइक आई हैड विशाल ओझा इन चैट एंड सॉरी मैंने विशाल का मैसेज मिस किया था, शाउट आउट टू विशाल ओझा. बट जब एक बार ये हुआ था कि I'm hitting everything right on stream and you're like okay this is the stream, and then there are days where you don't hit anything, so when you have a good hand और वो एक साथ नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ही चल जाता है. What do you do in that spot? मतलब आप कैसे हैंडल करते हो frustration? Just part of the game, man. Just part of the game. Like कुछ नहीं कर सकते. Like, you know, you have to just have a thicker skin, I guess. Like कुछ मतलब होएगा, वो होएगा ही, सबके साथ होएगा. अभी नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा, कभी होएगा, but होएगा ही होएगा. You know, so there are days like that, and yeah. Thank you, Gaurav Sinha, for saying that today's stream is awesome. Limp kiya, I made it 6x with the ace of clubs. He on the flop he put one blind. Limp kiya, he put one blind. On the turn also he puts one blind. I make it 6x with the flush draw with the pair, and he just jams. I should have just called the 1 BB, but flop पे भी किया. I mean, अभी तो it's strange, yeah. It's weird. Yeah, मतलब I उसने mean, jam कर दिया तो with the queen probably I'll have to fold, but अब तो fold ही करना पड़ेगा. yeah, but limp किया दो. I mean एक blind डाला अंदर flop पे भी और turn पे भी, so it's very hard to understand. I was trying to blow the pot up. Yeah. Very strange guy, man. This guy. Yeah. So ये था तो Rachit Gupta का था. What do you do to cheer yourself up when you're going to when your play is going down? I think you answered that before, तो वो तो चलो ठीक है. Yeah, just whatever makes you happy, man. Like खेलते वक्त तो music सुन लो. Like, you know, and that's a good thing to do. Okay. अगर थोड़ा tilt पे हो, friend से बात कर लो, like. We're betting 10 bigs for Raghav's favorite hand, pocket eights. Yeah. And let's go because we got so many limpers. चलो Yeah. ठीक है. 10 करते हैं, मजा आएगा. Let's go. Chords होना चाहिए राघव, उसके नीचे कुछ नहीं चलेगा. Chords के नीचे कुछ नहीं चलेगा. And ये लेंदी तो आने ही वाला है. ये this hand is a hand which, I mean, इसके ऊपर नोट बना ले भाई अभी already limp करके 10x call कर रहा है. हाँ, Nice. actually. और अभी तो मैं jam कर रहा हूँ. अभी hand खेल ले पहले एक बार. You should play your hand first and do it after that. Okay. Focus on your hand. Yeah, I'm just going in now. He's got 36 points, so yep. I thought he would call it off after he. Yeah, I mean, you can just bet like 10, 12 big blinds, you know.
Yeah. This is, I mean, again, this guy, I guess, is fine also because he's probably only paying you when he has small pairs, so it's okay, I guess. Yeah, yeah, Yeah. yeah. What should we do with jacks on big blind when UTG shoves and UTG plus one calls a shove and both covering us? What should we do? Uh, So say it again. what should we do with jacks on the big blind when UTG shoves and UTG plus one calls his shove? तो UTG ने jam किया, UTG plus one ने उसको call off उसका shove को call कर दिया and both are covering us. What should we do? कवरिंग अस तो ठीक है, लेकिन कितने बिग ब्लाइंड्स हैं वो बहुत मैटर करता है ना। अगर एक बंदे ने 10 बिग ब्लाइंड ऑल इन किया है, उस बंदे ने 10 बिग ब्लाइंड कॉल किया है, अपने पास 9 बिग ब्लाइंड है, इट्स यू कॉल। बट अगर उसने रैंडमली, आई मीन दिस अनलाइकली, अच्छा, बट अगर 20 बिग ब्लाइंड जैम किया है, उसने 100 बिग ब्लाइंड रीजैम कर दिया, मैं फिर भी कॉल ही करूंगा मैं तो। बट या जैक्स तो आई गेस इट्स फाइन, जस्ट कॉल इट so ऑफ मैन, maybe 100 bigs डोंट deep ही थिंक आप अबाउट। call off नहीं कर रहे कि 100 bigs deep भी नहीं, call अगर 100 बीबी, अगर 100 बीबी दोनों ऑल इन हो चुके हैं तब तो फोल्ड ही करना पड़ेगा, correct बट हाँ, जितना डीपर, जितना ज्यादा स्टैक होएगा उतना आई गेस बिकम्स लेस फेवरेबल, जितना छोटा स्टैक होएगा उतना फेवरेबल है कॉल करने के लिए। बट awesome अगेन डिपेंड्स ऑन स्टैक साइजेस। oh wow Malik Saab is something what Raghav does so I'm going to take this bro can I switch back to या Holden from PLO5 playing PLO5 from when it is launched is it a good move or not please tell Malik Saab results आपको बताने भाई पड़ेंगे अब हाँ आप भाई बोलते अब देख, अगर पीएलओ 5 स्टार्ट कर दिया खेलना तो अब होल्डर में मजा नहीं आएगा, यू नो। ये ऐसा है क्या ऐसा है क्या मतलब हाँ ये कैसे It's हो a रहा है very मतलब fun game now. Top game PLO5 is. You get to play a lot of hands and you get to call a lot and you get to like hit big hands, big draws. Fun game. got it well, oh, that's an interesting what type of music do you prefer while playing While playing, like I prefer something which is not very, like I will not listen to my favorite songs or like songs with meaningful lyrics and stuff like that, बह because जाते हो it can absorb you. हाँ Huh, but they can absorb you. Like sometimes something might remind you of something, or like so better to play something more steady, beats per minute. So like I mean, one of the artists I listen to a lot while playing is this artist called Lane 8. तो उसके okay 1-2 घंटे के sets है, which is very good. So वो क्या, it just keeps you in the same like zone, I guess. Listen to something relaxing, nothing too like crazy. But I guess it depends, man. Like सबका अपना अपना taste होता है. मेरा taste ऐसा है basically. While grinding. हाँ. nice Yeah. So guys, अभी we've got a few some time only left. तो आप लोग जल्दी जितने questions है जो questions है पूछ लो because we've also got tickets to give out. So आपके पास भी अगर questions है feel free to ask. बाद में बोलना मत कि यार पूछा नहीं और काफी मतलब मेरे को तो लगा कि काफी generic answers होते होंगे cash games में unless you get technical but there were so many things like जो मुझे already like मैं sorry end का बात अभी से कर रहा हूँ but I've already felt like there were so many answers which were like a little different like to hear. So yep, I think it's pretty useful. जितने basic questions भी लग रहे हैं but उसके answers काफी वो है. So feel free to ask man. Uh, how to okay this is good. How to play ये hand oriented questions में से है. How to play out of position with aces when you hit a set on the flop. मतलब मेरा ace आ गया है मेरे पास aces है. वो टाइम पे वैल्यू कहाँ से निकालो वो एक अच्छा क्वेश्चन है आउट ऑफ पोजीशन कैसे वैल्यू मुश्किल है सिचुएशन में। बेसिकली दूसरे बंदे को या तो ब्लफ करना पड़ेगा या उसके बाद अच्छा हैंड होना पड़ेगा इन जनरल, राइट? तो राइट I mean, again, depends. Like I mean, definitely slow playing is definitely a better option. Like but if it's a really bad guy who is just very passive, वो कॉल ही करते रहता है, ब्लफ भी नहीं ज्यादा करता, तो आई गेस छोटे छोटे बैट्स करके जितने निकाल सकते निकालो, यू नो। पर अग्रेसिव बंदा है, उसको अगर आपको लगता है कि ऐसा बंदा है ये जो मुझे किंग्स क्वींस में डाल के फोल्ड कराने की कोशिश करेगा, तो प्ले इट पैसिव, या डिपेंड्स ऑन द ओपोनेंट। वो इसलिए इम्पोर्टेंट टू लुकिंग किसके अगेंस्ट खेल रहे हो आप। got it nice Before grinding to maintain proper mindset, what do you suggest specifically for those who become less focused during long grinds? क्या करना है मतलब before your before your session starts? आप ऐसा कुछ करते हो कि you ensure? यार ऑनेस्टली मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मैं करूंगा, बीच बीच में करता हूँ, बट मोस्टली नहीं करता। एंड आई थिंक करना चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वन कैन डू इज, एक ऐप है प्राइम्ड माइंड करके, तो उसको आप डाउनलोड करो एंड वहाँ पे एक पोकर का अलग सेक्शन है
वहाँ पे डिफरेंट MP3s हैं basically, based on what you want, basically. So like this app is, for whoever doesn't know, this app is has been made by this guy called Elliot Rowe, who is the best mindset coach in the world. तो वो मैं भी उनसे सेशंस लेता था पहले 2016 17 में, 18 में भी थोड़ा, एंड फेडोर होल्स, आई थिंक फेडोर होल्स को आई थिंक काफी लोग जानते होंगे. तो इन दोनों ने मिलकर ये ऐप बनाया है, एंड इट्स अ माइंडसेट ऐप. Primed mind. पहले It's called- प्राइम्ड माइंड, या प्राइम्ड Okay. माइंड, इट्स वेरी वेरी गुड. उसमें आप अगर देखोगे तो पोकर का सेक्शन है, वहां पे आप क्लिक करो तो आप बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं उस पे, तो आप उनको क्लिक करके 8 मिनट्स के मेडिटेशंस भी हैं, 5 मिनट के भी हैं, 12-15 मिनट के भी हैं. दे आर आल्सो बेस्ड ऑन कि आप टिल्ट कर रहे हो तो उसको थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा Wow. वर्क करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो वो सुन लो जब आप टिल्ट कर रहे हो. कभी का प्री टूर्नामेंट ऑनलाइन ग्राइंड के पहले खेलना आपको अगर, तो उससे पहले वो सुन लो, उसका एक सेपरेट है. लाइव टूर्नामेंट के पहले सेपरेट है, FT के पहले सेपरेट है, काफी चीजें हैं. एंड एज समवन हु हैज वर्कड विद हिम like a decent amount, and someone like all my best results in tournaments also came when I was working with this guy. So I can tell you for sure that it really really helps to do any kind of meditation or mindset coaching and stuff. Mindset coaching might not be most very affordable for everyone, because it's quite expensive, but just getting the app, I think it's a very good start, and I think it's very very profitable to get that app if you're playing any decent stakes also. Spending money on the app is very good. And anyways, it's not just about poker, like और भी चीजें आप uh, और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो उस ऐप को आप, like just to get in a better mindset. Let's go. 49 bigs to call off. Let's hope he doesn't show a 5. I think he had Yeah. limped before. Good luck, us. He doesn't show a 5. Let's go, baby. No, man. Primed mind it is. ये भी एक So नई चीज. you can take a note on this guy. You can take a note on the other guy who had called your 10 BB earlier. No, I took him these on kind of that. things you Yeah. can do. इस पे ले लेते हैं. इस पे what would the note be? If I just tell you the action, he had limped and I made it 5x with my pocket queens. Yeah, इसने second time मेरे 2x open को 8x किया है दूसरे टेबल पे. Okay, so he had limped Lendy herd and I made it 5x. He called and मैंने इसलिए बड़ा किया था, 4x कर सकता था, but I know कि वो calling हमेशा. better 5x करो, पर वो 5x कर रहा है 6x. कॉल. हाँ, वो कॉल कर ही रहा है हमेशा. हाँ, तो ये नोट लिख, सबसे पहला नोट ये लिखना चाहिए आपको. Okay. ये लिम कॉल कर रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा आप 4x करोगे, 5x करोगे, 6x करोगे. हाँ. लिम कॉलिंग वेरी वाइड. This is a good note to make. Limb calling wide. very wide. हाँ. Yeah. Yeah, fair ठीक enough. है. Nice. हाँ. This is just a simple note, good enough. अब आपको पता है कि ये बहुत वाइड कॉल कर रहा है, तो आप वीक हैंड्स के साथ आइसोलेट नहीं करोगे ना इसको. अब आप Correct. अच्छे हैंड्स होंगे तो आप करोगे, and you want to try to build the pot. Yeah. Nice. Then और you can फिर write उसके like draws पे, उसके draws पे वो bluffing. खेला. हाँ. नहीं, draws पे खेल रहा था इतना. हाँ. टर्न पे क्या किया उसने? उसने वापस मेरे 30 bigs किया in a 48 big spot, 29 bigs किया just to keep it like less than 30, and he called it and he was playing on a draw, right? उसके पास था he had 5-7 I guess. He had he showed 7-8. So on 5-9 he was legend. 6 पे This खेल guy's रहा a था. legend, bro. This guy's a legend for sure. I mean, so he was playing on a 6. He he's was looking for a 6 draw. he's very reckless, obviously, and like, I mean, you can just write this man like reckless. He's check calling a huge bet on the turn with 4 outs, basically. Right. So that's a blunder. And then when he's not hitting, brick river पे ये all bluff भी कर रहा है. तो ये मतलब basically, तो अब अगर आप notice करोगे तो ये क्या हो रहा है इसमें, जब pot बड़ा हो रहा है ना, तब इसको चुल मची है कि मेरे को अब छोड़ना नहीं है basically. तो ऐसे बंदे के अगेंस्ट अपने को बड़े pots करना जरूरी है. जितने बड़े pots करोगे इनके अगेंस्ट, इतना ज्यादा आपको spew करके पैसे देगा. You know what I mean? So these notes will really help now. अब next time इसके अगेंस्ट आप hand में होगे, आपको पता है ये bluff करने के लिए ready है. Correct. Yeah, so you'll be able to call him down later. You should make sure that आप pot को शुरू से ही बड़ा करने की try करो. Make it big on the, वो limp करेगा 5x 6x कर दो. Flop पे 10 big blinds bet करो. अब आप turn पे 30 big blinds bet कर सकते हो. आप river पे all in कर सकते हो, या खुद भी all in कर देगा वो. Right. तो ये नहीं, मैंने आपका ही एडवाइस लिया, because what you had told me that time, right? Last time 40 bigs छोड़ दिए थे अपन ने उसके, तो इस time on the 48 big spot में on the I put up 29 on the turn, so that he had less left behind, so that river पे ले सकते.
the most important thing we got to do as a poker player is make sure that when we have a big hand, we must try to extract as much value as we can Sure. versus, especially against bad players. You know, yeah, we must try to play for stacks. Uh-huh. Hmm. What other question? Okay, wow, we've got a flush draw now, not flush draw. वापस सब लोग ने limp किया था. I just made it 4x this time with ace 5 and yep. Hmm. Good luck us. He's jammed 44 bigs. We have a nut flush draw. यही question एक आया हुआ भी है. I opened 4x. इसने पहले limp किया था. इसने 4x call किया I think. Yeah, because UTG पे right. And then ये board पे मैंने ये half pot किया. इसने jam कर दिया. He's probably got a jack, I guess. Yeah, and we don't flush. GG's. 2 pair था उसके पास. Unlucky. And ये जो stage हुआ इसके ऊपर ये question है राहुल का, and I'll just take that, where he's asked us Right. के yeah, I think if you've seen it, he's asked के how many times do you go all in with flush draw on flop 90 BB deep, heads up में always all in call कर देता हूँ flop पे with ace king suited या ace queen suited. What do you think, right or wrong? मतलब उसके पास flush draw था, so basically this kind of spot on the flop like how we had nut flush draw, and he calls it off 90 bigs deep. क्या करना चाहिए? कितनी, how often should he be doing that? मतलब यूजुअली अगर बहुत अच्छा फ्लश ड्रॉ है आपके पास, फ्लश ड्रॉ भी है, स्ट्रेट ड्रॉ भी है, या फिर ओवर कार्ड है साथ में, व्हाटएवर, देन इट्स फाइन टू प्ले इट लिटिल एग्रेसिवली. बट यूजुअली आप इतने सारे बिग ब्लाइंड घुसाओगे ना फ्लॉप के अंदर, तो वो उनका मोटा हैंड ही होएगा, तो वो नहीं चाहिए अपने को. लाइक वी डोंट वांट कि हम इतना बड़ा कर दें पॉट कि उसका बेटर हैंड ही है हमारे से. यू नो, वी वांट टू कीप हिज वर्स हैंड्स still in the hand, right? So yeah, usually when you play it, but of course depend करता है. अगर 3 bet pot है, आपने मोटा check raise कर दिया, it's fine, it doesn't matter as much. Yeah, like one should focus more on how not to make too many big mistakes. You know, that is key, I think. Like trying to just focus on आपके बड़ा hand है तो मेरे को maximum value कैसे निकालूं मैं, and focus on मेरे को blunders नहीं करने हैं. These two things I think will form a large percentage of how much you win or lose in general. तो ये दोनों चीजों में फोकस करना important है. Nice. ये भी एक situation आ जाती है where now I had 7-10 suited on the button, and because this guy is playing, and this happened to me last Yeah, week I on think it's stream good. also. Yeah, I'm playing, and I'm getting yeah, into it's more good to hands limp, which I would not, but I want to play which is against him, fine. which is fine, right? 100%, 100%. You can limp behind man on the button. It's completely fine. Yeah, actually I'm calling here also because in case we two pair, I think he'll give his entire 100 big stack. थोड़ा यहाँ तक तो कर सकता हूँ maybe. Yeah, yeah. No, I agree. When you're this deep against this kind of a player who is probably gonna like stack Sticky भी off. है, हाँ. Hmm. और लिम्प किया हुआ है, वापस से लिम्प किया हुआ है, so I literally have a इसके second. limp, हाँ, but इसके लिम्प से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है अपने पास. You know कि बहुत ही लिम्प Yeah, करता for है all we know, ये. 3-2 होएगा उसके Yeah. पास या 7-3 होगा. Snapped it. If he's on a flush draw, if he jams, okay, he checks. We'll just check back. Yeah, you should have checked turn, bro. I should have checked on. Yeah, you should check turn because ये मोटी bet करे ना फ्लॉप पे. अगर आप टर्न पे इतनी मोटी bet करोगे तो वो क्या कॉल करेगा आपको? अब obviously he's that bad that he हाँ. did call you with a worse hand, you know, this हाँ. guy. But हाँ, मतलब middling hand है ना अपना. Correct. तो middling hand in general अपने को कोशिश करना है कि middling hands जो है अपने उनको passively खेलना चाहिए. Sure. जो अपने strong hands हैं उनको aggressively खेलो और थोड़े से weak hands के aggressively खेलो bluff करके. So there's a concept called like you need to play like bit more polarized. Sure. Basically, like, you know, your top stuff and your bottom stuff play similar in that sense, and the middle stuff plays more passive. So Noted. Understood. Oh wow. And now he gets lucky with the king there. बेचारा glad underscore को फालतू hand के साथ ले गया. Okay. Okay, this is interesting. Rajat Basak का I really like I like the question. ये काफी लोग experience करते हैं कि if you're reading it कि if I study something then I often mess it yeah, up I while got it. playing at the same starting stage. Any That's right. suggestion? Yeah, I mean this is a common thing. यार सबके साथ होता है ये. ये होता है मतलब क्योंकि क्या होता है वो थोड़ा टाइम लगता है अप्लाई करने में जो सीखा है. तो शुरू में वो थोड़ा
equilibrium has shifted in a way, you know, of what you used to think about a certain situation पहले, और अब आप नई चीज सीख के it's not in sync, तो वो थोड़ा टाइम लगता है अप्लाई करने में. So I would suggest जब थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करो तो थोड़ा लोअर स्टेक्स में खेल के प्रैक्टिस करो पहले उन कॉन्सेप्ट्स को, तो it's just going to be better कि you know you maybe lose less. Perfect. We'll give a ticket to Rajat Basak. Yeah, give a ticket to him. Yeah. I've got 7 winners now. Minkle, Jay Ferro, Saurav, Akash Arora, Gaurav Sinha, Aki, Rajat Basak. We'll give more when it happens. But yeah, these are the things for now. Raghav, how much time do we have? It's 11:10. आपका time 11 का था. अभी Yeah, आप we can be like 15-20 minutes. awesome. Cool. Yep. So okay, awesome. Are we going to see Raghav on stream soon? Is he going to start liking it or not? वो बताओ आप. Yeah, मैं करूँगा stream. एक और हमारा तो plan है ही, हाँ. एक और stream. So वो करेंगे. I'll play some PLO5 in that. Oh my and God, मजा ही आ जाएगा. chips will fly, so it'll be fun. Yeah. And what stakes do you play? PLO5? अभी Pocket 52 by 250 500 is the max that they have. So I'll be playing that. Let's see later on if they introduce higher stakes as well. अच्छा, मुझे लगा अभी 250 फाइंड तक ही है, बट मैं 100-200 खेलता हूँ ऐसा बोलोगे, बट आपने सीधा जो बोला कि मेरे को तो और हायर स्टेक्स चाहिए, मजा ही आ गया. सही है, it'll be fun. Nice. What skill? Vijay Thakur. What skill is more important, Hold'em? Discipline in the range of hands you play, or the ability to read the other player? How can you teach someone to trust their read and to let a hand go? I mean, both things are important, man. Discipline is obviously very important. Reading the player is important as well. Like all these are skills which one must acquire slowly. I guess, you know, like जो आप बोल रहे हो, trust, how to teach someone to trust their read and to let a hand go. I guess that's more a personality thing. अगर आपको लग रहा है कि like you should fold and you're not being able to do it, then you need to think like, you know, like why am I not being able to do this? Like ये क्यों, मेरे को पता है कि मेरे को fold करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहा मैं? तो as I said earlier, maybe take some more time. थोड़ा सोचो, ego में मत आओ. Like, you know, just remember it's a game at the end of the day. The other guy's playing a strategy, you are playing a strategy. It has nothing to do with any ego or trying to beat someone or whatever, you know? Okay. Why do so many highly intelligent people, if you've read that question, which is a very broad ऐसे I read it. बकचोदी Yeah. क्वेश्चन है, बट कि ऐसे इतने ज्यादा लोग आईआईटी डिग्री और सबके बाद क्यों पोकर पे आ जाते हैं? अक्की का क्वेश्चन है. Hi, I mean, it's because obviously, yeah, like this poker is a game which draws in smart people, you know, like the people who like to solve problems, who are strategy oriented. Like a lot of people who have played a lot of games in life. So, like for example, I've also played, like since I was a kid, I've played so many games, board games, card games. So like just I enjoy strategy and, you know, like enjoy beating other people at like these kind of games as well. So it'll always draw people from IIT and stuff. I think IIT में खेलते भी बहुत हैं लोग. बहुत सारे अच्छे players Yeah. भी हैं हमारे industry में अभी जो IIT से आए हैं. A lot of players are that. So yeah, it attracts smart people for sure. Okay. What is the blue tag? Prashant asked me. It's for a maniac. Red is for a pro. That's how I just distinguish in my this thing. So lengthy को अभी अपने maniac कर दिया. And we got good read this thing notes. So we are learning it from Raghav itself. मेरे को ये क्वेश्चन था यार, आप बंसल हो, आपने स्टार्टअप वार्टअप कुछ सोचा नहीं क्या? राघव, how did that? No, अभी मैंने business start किया है. So let's see how that goes. अच्छा. It's still early days. I think I mentioned to you like something in real estate in Goa. Sure. Yeah. So yeah, but Nice. let's see. We'll evaluate in a few years. You know. One more Bansal sells his company और एक अच्छा, उसके बाद आप सीधा ट्राइटन में दिखोगे क्या? ऐसा कुछ प्लान है क्या? अभी मैं ट्राइटन जा रहा हूँ अभी. उसके लिए बहुत पैसे बनाने पड़ेंगे भाई ट्राइटन खेलने के लिए. Like you know how Santosh Suvarna does it, right? 200-250 के. Yeah, थोड़ा आप है ना. If you can थोड़ा कैमरा को, I'm just realizing थोड़ा है ना, ये कर दो ना, भले लास्ट है. Because I've been recording when we create a lot of mini clips out of this ना, तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा मेरे को अभी realize हुआ I made a mistake there.
क्या थोड़ा करना है because बता. you're coming ahead ना, तो आपका face थोड़ा half कट रहा है थोड़ा, वो थोड़ा अच्छा, when I'm doing this. when you're coming ahead, yeah, when you're coming ahead, right? Like you just went back, right? Right, So right. that kind of thoda, Okay. yeah, no worries. Yeah, yeah. Okay. Try. Do you like plan for Triton and all those things? Like how Sattu No, 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 Suvarna no. does? I've stopped playing tournaments right now. I'm enjoying playing cash. Um, short sessions खेलता हूँ मैं cash के, and PL5 is a high action game. एक दो घंटे खेलता हूँ, take a break, and then I play again, like, if I feel like. But I'm focusing on my other stuff as well. But enjoying playing cash right now. Tournaments थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब high stakes tournaments, to be honest. The level of focus has gone up a lot. Like there's so many very good players in India now, like, who are putting in so much hard work. बहुत पढ़ाई करते हैं वो, like वो stables में हैं, like, they're running a lot of sims, they're working really hard, and so like the tournament scene is not easy anymore. It's anyways, and then you can also make more money in cash anyways. I've always believed that for sure. So I mean, just overall, it just doesn't make sense to play that many tournaments. तो मैं तो कैश में खुश हूँ अभी. टूर्नामेंट्स का कोई ज्यादा सीन नहीं है. I'll play tournaments now when I feel like playing, like, अगर बहुत High मन है तो value. लाइव सीरीज के लिए चले गया. से हाँ, हाई वैल्यू टूर्नामेंट हुआ कोई ऑनलाइन, या फिर मोस्टली लाइक लाइव टूर्नामेंट्स, उसमें मजा आता है. Like I think most of my success has also happened in live tournaments. I enjoy playing that. I think that's a different skill set which I feel like I'm good at. Yeah. The Nice. online अभी तो बहुत अच्छे अच्छे players आ गए टूर्नामेंट्स में. Yeah, like is this Respect. like ऐसा कुछ है क्या कि your peak was like not poker peak? What I mean is your hustle peak in poker, जो hustle करना था, मेहनत करनी थी, that was 2016, 2017, 2018. Was that the case? No, I'll be honest. I'll be honest. It's maybe not the best thing to say, but like I have never really worked that hard at Okay. learning the game. It's been something which I wish I would have done better and worked more harder at it. But I just feel like I've always just managed because like I've always just done well because I was better than the rest. And that time there was not that many solvers. It was more street poker. Like earlier, like अभी last 3 years में बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा Ah, theoretical हो गया game. But before that, it was not as theoretical. There was a lot of like, and I used to play a lot more live poker anyways. हाँ. So live में आप काफी और information होती है. Like I feel like I'm good at reading people. So like you can play street poker, but अभी काफी change हो गया game. काफी change हो गया है. काफी lot of young kids like really working hard. So yeah, the landscape has changed quite a lot. Correct. Yep, absolutely, Mm. absolutely. Yeah. Uh, okay. Final table. आपने कैश का आंसर किया था. Though we are talking about cash because yes, cash games का Mm. action बहुत ज्यादा बढ़ रहा है and बढ़ने भी वाला है on Pocket 52. That's the plan. And we For know sure. like what they've done with the PPC. And like I mean you're aware of the PPC and tournaments happening on Pocket 52. Like they've been Yeah, crushing of course. every series. And Yeah, अब yeah, cash games में also they are kind of that's the plan. So बहुत सारी चीजें हो रही है. This getting Raghav on stream being one of those. तो वो yeah. बहुत सही है. Yeah, So good action about it too. And even cash games at all six, even to 500 that I've been playing, lot of crazy guys on there in PLO5. So must yeah. check out the action, guys. हाँ. So मैं sorry मैं उसके Mm. साथ कुछ क्वेश्चन पूछा था बट वो मैं भूल गया unfortunately. Okay. Hey, I would like to ask Raghav bhai that can I get coached under him personally in every aspect of it? Is it fine if I text him need a change in poker journey? It is getting hard to survive alone. So ये क्वेश्चन मैं अभी उनको on the spot नहीं डालता. बट लाइक आप टेक्स्ट करो उनको इंस्टाग्राम पे हिज इंस्टाग्राम आईडी है एंड ऑल्सो राघव इफ यू कैन हाउ यू वांट टू आंसर इट एंड आप ये भी बता दो कि ग्रुप में आप कैसे लाइक ग्रुप का कैसे हाउ डू यू बिकॉज ही इज सेइंग अलोन सर्वाइव करना मुश्किल है इट इज ऑनेस्टली इट इज कैसे ग्रुप कैसे Right. क्रिएट करे ग्रुप कैसे So फाइंड करे I would suggest, like, what you should do is just there are a lot of poker groups, man, on Facebook, and other channels. I think there's one called Monster Poker Community on Discord as well, which is good. And other people have communities, so you should join those, you know, and ask questions there, talk to people there, and learn more of that. I think unfortunately, I don't think I would have enough time. I'm very overworked myself right now to be able to help out much. But sure, man, like if you drop me a DM once, like I don't mind pointing you to the right way. Yeah.
So नहीं, absolutely, Look, and yeah, that's a good हाँ, answer. Monster Poker की team does look into it, and a lot of people do into this. तो आप खाली मतलब reach out करो, और जैसे खाली अगर 2-3 लोगों से बात भी करोगे तो आपको पता नहीं है कि maybe only like a few hand history review sessions are so impactful, right? So अगर आप कोई लोगों के हम्म, साथ वो कर लोगे तो भी बहुत ज्यादा advantage रहेगा. Talk to people, हम्म, reach out to them, बहुत ज्यादा उसमें रहेगा फर्क. yeah. Yeah, there are a lot of people who are in this space, who are looking to help people, and maybe you can look to join a stable. There's a lot of stables also in India where people will stake you and will coach you. So that's a good way of getting better at the game as well. So check out these things. Like, I think the best thing to do is to join some of these communities and Facebook groups and talk over there, basically. We opened 2-5 on UTG, and now we have two pair, which is good. Boom. हाँ, अभी यही वो गेम है, राइट? अभी इसका रिवर्स इम्प्लाइड ऑड्स भी होता है, बट अगेन दिस गाय इज अ शॉर्ट स्टैक एंड दिस गाय हैज अ स्टैक, बट ठीक Hmm. है, बिकॉज ही कैन हैव अ किंग 4 व्हिच इज डिफेंडिंग ऑन द बिग ब्लाइंड और व्हाटएवर. No, but for my student में और भी चीजें हैं ना, like you'll also make straights which are gonna get करेक्ट, paid a lot of सूटेड है money. इसलिए, या दैट्स द ये या. थोड़ा सा, हाँ, तो it's fine. Deep stack में ये सब हाँ अच्छे हैं, अच्छे खेलने के लिए. Now we are in position, so probably on the river I'll just check for showdown is the way I see it. Okay, we take it down, but yeah. Okay guys, last 10 minutes, let's max out how to pray poker gods, any contact. uh, Go meet. आपको बहुत लोग मिलेंगे वो मंदिर की लाइन में, Actually, पता चल ये जाए तो. ये मेरे साथ हुआ था एक बार वेगस गया था मैं और काफी टूर्नामेंट्स ब्रेक हो गए थे बैक टू हाँ, बैक. आई वाज टेलिंग ना मेरा गंदा हाँ. like 2 years of like really running bad. This one Vegas trip was World Series was really terrible. Like I was just like shocked क्या हो रहा है. But then after like 2 or 3 weeks, Ashish Ahuja comes to Vegas as well. और हम कोई break में मिलते हैं. And we're just talking. I'm like, and he's like, "Oh, bro, कैसा चल रहा है Vegas?" I'm like, "Bro, बहुत हार गया हूँ, all of that." And then he's like, "Bro, कुछ नहीं होता. This tournament you'll do well." ठीक है? And I just rubbed his head like this. हाँ. And I went back. I came back from break, hit every hand, won every pot. So we see Ashish Ahuja rub his head. क्या बात है, नाइस. Yep, Ashish Ahuja always, man, always joins the stream, and yep, amazing person. And oh man, I was looking to hit a queen or the ace with Lendi involved. I'm gonna let this go. This guy jamming in, he opened at 6x. Yeah. Lendi, come on, man. Lendi के पास 8-5 हो सकता है. He's the only one who can have an 8-5 or this thing there. Uh, okay. Can we get max rake back if we make an ID under Raghav? uh, I okay. mean, it depends on the volume, man. Like you play, they'll upgrade you. Like the rakeback system is very well designed on Pocket 52. It rewards people who are putting in volume on the site. So check it out. And if you do play high stakes and if you put in a lot of volume, then yeah, hit me up. I'll get you the 60% rakeback. ओके एंड यहाँ मैं वापस 6 पर यहाँ लेंदी हर्डी नहीं है, बट एनीवे या वी गॉट अ गट शॉट. विल कॉल 1 बीबी. जय नायक से हेलो पार्थ भाई, थैंक यू, हेलो हेलो हेलो. सॉरी गाइस अगर कोई भी, अरे वाह लग गया स्ट्रेट, यही होता है ना कि एक, बट अभी Rating इसमें, कब देखेगा? हाँ बट यार यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं. चेक करेंगे, वी लेट हिम Hmm. कम Check ऑन. raise big. Oh, sucks. सब होशियार है ना भाई, प्रॉब्लम ही तो वो है. यहाँ तो अभी क्या है? चलो ठीक है, लेट्स गो मैन, किंग 2, दैट्स व्हाट यू हैव. I told you. I'd never know what he has, but chalo theek hai, we got paid. We went for an overpod bet there. We hit top pair. Yep, this guy has a short stack. He'll probably jam 13 bigs. We could have, yeah, I could have just gone small, but theek hai, chalo. Uh, what's the gameplay against calling station players? You got to play So it like, against calling stations, they're not folding ना. तो इनको basically जब आपके hands हो तो बड़ा bet करो, ज़्यादा bluff मत करो. Simple. oh, I opened 2.5x. This guy makes it 10 BB. We have nothing on him. He's just joined the table. खेल भी सकते हैं, बट मैं अब जाने दे रहा हूँ इन पोजीशन. कॉल Yeah. ऑफ था तो इट्स ओके टू फोल्ड.
हाँ, I think so. Off है और मतलब काफी And he's short stacked बिग also है. ब्लाइंड से ज्यादा 3 bet करते भी नहीं है लोग in अच्छा, general. correct. And 50 big blinds के तो और भी कम करते हैं in general, so it's fine. Queen Jack off is not going to do that well. The 10 big blinds की उसके पास बहुत We've ज्यादा got stack भी नहीं है. 71 people watching. It's crazy, crazy, crazy for my channel also, boss. It's Yes, crazy. for Yeah, watching thank you, guys. man. Yep. That's the question against this thing. अगर okay, ये थोड़ा मतलब मैं वो उस हिसाब से question है कि probably someone who's lost money उसके ऊपर है. I'm not हम्म. like getting into the way he's asked it, but के काफी हार चुके हैं और एक ही बचा है इस कंडीशन में क्या करना चाहिए मुझे. So I'm sure like अपन लोग काफी लोग बोलते हैं bankroll bust हुआ, like whenever I've said that, like I've not really busted my bankroll because I never allotted a bankroll for poker. I just lost money the whenever I've played personally. तो ऐसा नहीं था कि my हम्म. bank balance came down to a minimal or whatever. तो मेरे केस में वो है, बट जो लोग सच्ची में ऐसा करते हैं तो जब आप वो स्टेज पे पहुंचते हो तो क्या करना चाहिए? I mean, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ट्राई करनी चाहिए कि वहां नहीं पहुंचो आप इस सिचुएशन में, हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है. बट I mean, if you're struggling with this stuff, man, better take a break or not to play, to be very honest. nice. It's poker is a game which should not affect आपका daily life affect नहीं होना चाहिए ज़्यादा. To be very honest, like you play the game. See, if you're a professional, then fair enough. Then you should just manage yourself properly. But if you're not a professional, you're recreational, then it should not affect your life, man. Play responsibly, play responsible stakes. Like don't go crazy. Like it's just a game, like and you gotta play when it's fun for you to play. Stakes that are fun for you to play, not stakes which will affect your daily life. Okay, we've got top pen. Okay. We all open 3x and this guy bets. मैं यहाँ वो 6 बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा. I feel I'll just make it 15. You can tell me after the hand like कि क्या करना चाहिए था. If I should have check raised, I mean check raise तो नहीं किया, but हाँ okay. If this thing was fine there, re-raise there. SPR is like 1:1. अब तो जाना है. Check करेगा. Yep. उसने वो भी कॉल किया ही है. We're going half pot, a little more than half pot, 52%. Yeah, I don't know how to should have gone. Like if he calls off here, perfect है. But do tell us कि मैंने turn पे या 40 bigs पे ये किया. मेरे को check करके. Okay, wow. अभी मैं हारूंगा तो अलग ही कुछ. I don't know. Do tell me. Queen Jack, Queen King. King Queen. Yeah. Okay, Yes. let's go. Yeah, you gotta. Yeah, it's fine, man. थोड़ा small भी bet करते हो turn पे, but it's fine. Like you can see he's not wanting to fold, right? Like Yeah, the वो re-raise पे उसने मन fold बना. नहीं किया. हाँ, वही. तो फिर हाँ, तो I like the raise also on the flop. It's important कि जब ऐसे lower stakes में लोग बहुत डोंग करेंगे, हाँ. like इनको नहीं करना चाहिए, वो डोंग करेंगे. तो इन सिचुएशन में it's very important to extract maximum value. वो डोंग करेगा, उसको रेज करो. आपका इतना अच्छा हैंड है, रेज करो, get the money in. Let's go. We're learning. I probably would have just called thinking कि अरे अभी one in position है. I think before this stream I would have done that. मैं call करता. I think again thought process should always be value. अगर है मेरे पास तो maximize कैसे करना है, ये बहुत important है. ये बहुत बड़ा leak है. I think this is something which people can take away for sure. People who are playing कि just focus on your value. आपके value hand है, मोटा hand है, get the money in. Like try focus on getting the money in, not on trapping and slow playing and whatever. Just try to get the money in. Like raise, re-raise, like get it in. Like I people like are playing bad in general. At time of downswing, should we stake down or take break? I think both options are fine. I think both options are necessary also. If you feel like you're playing fine, then I think going down in stakes is a good idea. If you feel like आप मतलब not feeling it एकदम भी और अच्छा नहीं खेल रहे हो तो break लेना better रहता है, in general. Okay. We'll take Nikhil Khare's question and Kanav Goyal ने बीच में खाली बोला कि nice content, very valuable content. Yes, absolutely. मतलब you Thank you won't so believe. much. मैं इतनी बार सोचा हूँ कि मैं यहाँ मैं काट के इसके मिनी क्लिप्स बनाऊंगा because this is so valuable. So yeah, absolutely for sure. Sure, guys.
Nikhil Kare says, I see many players, mostly maniacs, surviving at the end of the tournament. While I'm just limping here, while I play tight and it becomes difficult to survive when I finish on 40th or 50th in that range. This is a very common mistake. This is a very common theme of how it goes, man. Like it's in tournaments, I think it's better to be crazy. So I was actually one of those guys, like like when you're crazy and you're deeper in a tournament, ना क्या होता है, लोग आपसे पंगे नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि ये तो पागल आदमी है, ये मैं 3 bet करूंगा इसको लाइट तो ये तो रख देगा, ऑल इन कर देगा, मैं ब्लफ करूंगा कॉल कर देगा. तो जो बेसिकली पीपल हु आर क्रेजी, they actually have an extra edge in the later parts of a tournament because people don't want to mess with them. तो उनको बहुत फ्री के चिप्स मिल जाते हैं. Whereas if you're playing tight, अगर आप बहुत टाइट खेलो टूर्नामेंट में ना लेटर स्टेजेस में, that's a problem क्योंकि फिर आपका स्टैक छोटा ही रहेगा, आप ब्लाइंड आउट होते रहोगे, फिर आपका स्टैक छोटा होएगा, फिर आप ऑल इन करोगे अपने 8-9 बिग ब्लाइंड के साथ. तो कभी क्या आपको बैड बीट मिलेगी, आपको लगेगा अरे यार मैं तो अच्छा रन नहीं करता. Raghav, sorry, लेकिन आप quads, अरे यार, sorry, so sorry, but Oh, I didn't see it. 8, I didn't play this, but 8 के साथ quads हुआ, तो आपका था, अपन ने बोला था quads करेंगे, तो sorry, so sorry, हाँ बोलिए. No, go for it. Yeah, let's see. Sorry man, I broke your thought. It was No, about it's okay. मेरे को बताना था खाली, बट वो हैंड ऐसे भी चला गया. अपन सूर्या पोकर का आंसर कर रहे थे कि डाउन और शुड वी टेक अ ब्रेक और क्या करना चाहिए डाउन स्विंग. आई थिंक वही क्वेश्चन था, राइट? नहीं वो तो आंसर कर चुका था, मैं कुछ और थॉट प्रोसेस में था. निखिल करेंगे, सॉरी, 40-50, बी अग्रेसिव व्हेन यू आर प्लेइंग. हां, करेक्ट. तो टूर्नामेंट्स में हां बेसिकली तो एक चीज क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि बहुत अनलकी हो रहे हैं, बट एक अगर आप लाइक लोगों को, फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस इज you get all in ace king versus ace queen and you win and you're like yes I'm supposed to win. Okay, then you have ace king versus ace queen again, okay, and again you win and okay fine, then they lose, then they get it in ace king versus ace queen third time and then they lose and like oh my god I'm so unlucky, and that's not how it works क्योंकि आप तीनों जीतने के लिए आप बहुत बड़े अंडरडॉग हो. अगर आप तीनों जीतोगे it's not going to be that likely an event कि आप तीनों जीतो, so दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद टाइट पीपल फेस कि वो टूर्नामेंट्स में क्या होता है, वो ब्लाइंड ऑन होते रहते हैं, फोल्ड करते रहेंगे, फिर 8-9 बिग ब्लाइंड बाकी रहेंगे उनके पास, फिर वो ऑल इन करेंगे और फिर वो then they like oh I got unlucky. But so you must play a little bit more aggressive in tournaments. It's just needed, especially in later stages. You must have some moves in you. You must have some aggression. You cannot just like not defend your big blind and like not bluff that much. You must bluff a little bit, you must try to take some spots to make some trips. वरना टूर्नामेंट जीतना बहुत मुश्किल होता है, वरना इम्पॉसिबल ही ऑलमोस्ट टूर्नामेंट जीतना. इन अ टूर्नामेंट आपका सारा पैसा टॉप 3 में होता है मोस्टली, so that's why aggressive players, even if they're crazy, even if they're like they're not playing right, it doesn't matter, but if you're aggressive you are more likely to finish in the higher positions in tournaments and make money. Okay, Raghav, we'll take the last 3 or last 5 questions. आप बता दो. Last 5. Sure, let's go 5. Let's go. Nice. Okay. ये फ्रस्ट्रेशन का क्वेश्चन नहीं लेते कि इन PL5 यू नो टेबल इज जूसी, बट आपका हिट नहीं हुआ तो कैसे फ्रस्ट्रेशन हैंडल करने का. भाई ये तो नॉर्मल है यार, जब हिट होता है तब याद करो. हाँ वो करो. ओके, कैश ओके, रिकवरी पे बात करते हैं. ये थोड़ा ब्रॉड है. अनिर्बन चक्रवर्ती का क्वेश्चन है, कैश रिकवर कैसे करे जब बैक टू बैक बैड बीट्स एंड बैड रन हो जाता है, तो मेंटली स्ट्रांग रह के रिकवरी कैसे करे. और एक कैश रिकवरी के ऊपर भी अगर आप कुछ बता दो, बिकॉज वो एक और थोड़ा मेरे मन में भी रहता है. बढ़िया, ये दिस इज अ लीक इन थिंकिंग. ऐसे नहीं सोचना कि आपको रिकवरी करनी है मेरे को. ये थॉट प्रोसेस ही गलत है और इसकी वजह से बंदा यूजुअली हारेगा. और you cannot come in with the mindset कि मेरे को रिकवरी करनी है. इसलिए so the mistake that is happening here is not कि कैसे रिकवर करना है मुझे. ये the mistake is happening कि आप जितने स्टेक्स खेलने चाहिए आपको, आप उससे हायर स्टेक्स खेल रहे हो. तो इसलिए आपको वो 2 पॉइंट हारने में भी आपको लग रहा है यार शिट मेरे को रिकवर करना है. ये आपका अगर थॉट प्रोसेस है तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप अच्छे से बैंक और मैनेजमेंट के साथ खेल रहे होते तो आपके 50 बाइंस हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप समझ लो आप 10,000 रुपीज बाइन खेल रहे हो, तो 5 लाख रुपीज आपके पास हैं खेलने के लिए. फॉर दिस इज एन एग्जाम्पल. तो देन अगर आप 2 बाइन हारोगे आपके 20,000 जाएंगे. यू आर नॉट गोना गेट अफेक्टेड दैट मच, ओह लेट्स गो. सॉरी आप बात करो. आप हाँ गो फॉर इट. But yeah, so it's important to play the correct stakes. तब ये सब चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं. आप हायर स्टेक्स खेलोगे तो फिर 2-3 बाइन हारोगे तब भी दर्द ज्यादा होएगा आपको. ये मेन प्रॉब्लम हो रही है शुरू में बेसिकली.
Yeah. Perfect. So, yep, bankroll management problem. ये bankroll management problem है, हाँ, correct. सही है. Yep, if you keep getting bad beats, should you frequently in a particular day, should we keep continuing or sit out for the day? Yeah, whatever. आप टूर्नामेंट खेले तो नहीं कर सकते सिट आउट, बट अगर आप टिल्ट पे हो तो कैश गेम में अच्छा ये एडवांटेज है, आप आराम से सिट आउट कर सकते हो और बाद में भी खेल सकते हो, यू नो. Yep, absolutely. Okay, guys, last 3 questions left, and I'm just looking into the overall questions which we've got. अभी मैं technical नहीं जाऊंगा कि capped range के बारे में बता दो या कुछ, वो नहीं जाते. मतलब अब okay, we'll ask a PLO 5 question because वो था. ये एक ही जन का question है. Best course for cash game. I play PLO 5, run it twice. I don't know how to bet and how much bet when I got nuts like full house and 4 of a kinds. How to know opponent will call or not? नहीं. Okay, should we play run it twice You or cannot not? हाँ, जो भी आप आंसर कर सको इसमें. अरे यार, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया. see the first thing you said, like, how do we know the opponent will call or not? We don't know. See, we gotta play our own game. Your focus should be to keep. There's many variables in poker. क्या-क्या चीजें, बहुत सारे factors हैं जो आप सोच सकते हो to before making a decision. आपका एम है कि कम फैक्टर सोचो, जो इंपॉर्टेंट वाले है वो सोचो, जो आपके कंट्रोल में है वो सोचो, उनके बारे में सोचो. अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके पास तब यूज करो उसको. डोंट जस्ट गो फिशिंग फॉर थिंग्स इन द डार्क कि ये कैसे खेलता होएगा. अगर नहीं पता तो नहीं पता ना. अभी अपने को अपना हैंड बैट अच्छी तरह से खेलेंगे, तो ये आप अपना थॉट प्रोसेस रख के रखो. दैट विल बी मच मोर क्लीनर फॉर यू. और Perfect. सेकंड रन ट्वाइस वाली बात, हाँ, रन ट्वाइस गुड मैन, अच्छा है. मतलब रन ट्वाइस क्या वेरिएंस कम करता है, which is always a good thing. तो रन ट्वाइस करना चाहिए. मैं तो बोलूंगा जितना बार कर सको करो रन ट्वाइस. Okay, we've got a flush only. I mean, anyway, not to think too Yeah, much. we He has win. quads. That's all. It's easy. Not to think too much when I bola, but damn. Okay. Okay, last 2 questions, guys. I'm just being very selective of the questions. Okay, this is a question which is uska hi hai. In no limit hold'em tourneys, I can do well, but no limit hold'em cash not so profitable for me. मतलब loss making. Uh, uh, I'm not able to figure out why is this so. I mean, firstly, you should, if you feel like you're making money in tournaments and you're not playing well in cash game, तो firstly I think maybe अगर आप cash game खेलो तो आप कम stack के साथ खेलो, क्योंकि आप used to 30-40 big blinds खेलने के लिए. 100 big blinds is a different game altogether. उसमें ranges थोड़े change हो जाते हैं, strategy थोड़ी change हो जाती है, तो maybe that. And you can study a little bit, man. तो काफी content है online. Cash games जो लोग खेलते हैं उनको follow करो, streamers को देखो, ये सब चीजें करो. Yeah. Okay. Okay. Do you suggest any book or material for study material for tournaments as well as cash games? Anything like that? If you have found useful, anything like that you have? Honestly, I have not really read many books in poker. Just watch content. I think the best thing to do is, like if you're not looking to spend much, like I think $25 may run it once ka subscription milta hai for the basic videos. They have 2 levels, elite and the other one. So elite is there's no need to get the $100 one. Get the basic one. That's $25 a month. That's not much to pay, and you get a lot of videos, man. And you'll get videos where people who are professional coaches, they're teaching कि कैसे खेलना चाहिए, how you should think about hands, thought process क्या होना चाहिए आपका. And that's the main thing actually. आपको one can only become good at poker once they start understanding कि सोचना कैसे है इस सिचुएशन में. मुझे ये नहीं कि इस सिचुएशन में क्या करना है मेरे को, नहीं, इस सिचुएशन को सोचना कैसे है इसके बारे में, वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो समझना. तो वो इसलिए आई वुड सजेस्ट वॉच सम कंटेंट. और कंटेंट देखने में मजा भी आता है, ऐसी बात नहीं है. यू फील गुड वॉचिंग अ वीडियो, सीखते भी हो, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी. या अगर हार रहे हो तो कम हारोगे, तो इट्स जस्ट अ गुड यूज ऑफ टाइम. Yeah, instead of watching like some shows, like for example high stakes poker के आप अगर सारे hand देख रहे हो, that's good, that's fine, it's fun also to watch. But don't just watch like 15 मिनट के highlight जब all in हो गया लोगों का. FT चल रहा है कोई टूर्नामेंट का, सिर्फ all in देख रहे हो आप, वो उसका कोई, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, वो इसमें कोई वैल्यू नहीं है. तो पूरे स्ट्रीम्स देखो अगर देख रहे हो तो.
अगर टूर्नामेंट प्लेयर हो तो आप एक्चुअली देख सकते हो, ट्राइटन के स्ट्रीम्स होते हैं, उसमें डे वन से कवरेज दिखाते हैं वो, और टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आपको वो देखना बहुत अच्छा है, वो देखो इंस्टेड ऑफ जस्ट वाचिंग की ऑल इन ऑल हो गया, एस क्वीन वर्सेस नाइन्स, अब वो 1 मिनट लगा के टाइप डीलर पत्ते खोल रहे हैं, फ्लॉप टर्न रिवर्स, मजा आ रहा है देखने में, दैट्स फाइन, बट इट्स नॉट लाइक यू डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट, यू नो. got it. Okay. Uh, ये- uh, थोड़ा भी लीव एवरीवन विथ वांटिंग मोर, ताकि अपन और भी सवाल कर सके. राघव, जस्ट सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आपको Yeah. आंसर करना है. आपके सामने सब है क्वेश्चंस. आई एम जस्ट डूइंग अ मैथ ऑफ वेयर वी आर 3000 rupees down on this table, and we are uh 10,000 up on this table. So we're 7,000 up All right. because All of the right, let's aggression go. and the ज्ञान we've got. क्या बात है यार भाई. मैं दोनों टेबल मालूम है, स्टार्ट ऑफ द वी आर ऑन द स्टार्ट ऑफ द टेबल. अपने को बैट बीट्स मिले थे दोनों जगहों पे, एंड वी आर बैक ऑन द पॉजिटिव. आई लाइक दैट पार्ट. 70 बीबी अप. नॉट बैड. वी कुड ऑफ कोर्स डू Good. बेटर, बट अभी तो सीखे हैं. नेक्स्ट स्ट्रीम पे तो नेक्स्ट स्ट्रीम पे तो Next अपन team राघव job. को सिखाएंगे कि अरे ये नहीं, ऐसे ओपन 3 bet. बट यार, it was crazy. We got It's fun. yeah, man, Raghav. Just fun. I hope you had fun, and thank you so much, man. Because Yeah, it's fun, man. I hope you guys picked up some good, useful tips to use and to apply in your game, and to your mostly your bankroll management. From what I'm feeling from the questions, I think bankroll management is the biggest issue which people have. So be responsible, guys. You know, and play stakes that are feeling comfortable for you. done. Uh, And we have to play एक अपन बाउंटी इवेंट भी खेलेंगे राघव, where we want you on table with everyone. तो मजा ही आ जाएगा उस पे अगर कुछ कर सके तो. We'll play smaller sure. stakes where everyone can play, and Yeah. we'll keep a bounty on you. तो उस पे कुछ Okay, done. उस पे कुछ मजा आएगा, and it'll be Just fun fun for everyone. tournament. Yep. Man, thank you so much, Raghav. Yeah, Cheers, I hope it guys. was fun. Thank you Cheers. so much, man. And cannot For be sure. thankful. It's like a cash games masterclass. Thank you, man. Thank you so much. Thank you, guys. Cheers for tuning in. Hope that was fun. And I think catch you guys next week. Let's go. Thanks, man. Thank you so much, Cheers. boss. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers, guys. Bye-bye. Bye. I'll do a giveaway, and 10 winners to announce kar diya. I'll do that part. Oh, man. Yes, this part player cam को अपन बंद कर देते हैं. Let's go, guys. Hit the like button before you leave. Absolutely. लाइक बटन मुझे नहीं पता चल रहा है कितना है. मेरे हिसाब से तो खाली 18 पे ही है, बट मेरे को नहीं पता कितना है. 46 पे है. ओके. यप. यू गॉट 58 पीपल वाचिंग. गाइस, 10 लोगों को टिकट्स दी है, और 10 लोग जो प्री स्ट्रीम थे उनको उनके क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी है, बिकॉज मैंने गूगल फॉर्म भरा था. तो उसमें से मैं अभी एक विनर्स अनाउंस कर रहा हूं. जो स्ट्रीम में आए थे गाइस, उनमें मैं बता देता हूं कौन विनर्स है. 10 विनर्स. मिंकल सिंह परिहार है, जे फेरो है, सौरभ है, आकाश अरोरा, गौरव सिन्हा, अक्की, रजत बसक, अंजन घोष, संकेत देशमुख और अनिर्बन चक्रवर्ती. ऑल 10 ऑफ यू गाइस, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग अपने आईडीज दे दो, 10 लोग. एंड यप, 10 लोगों को दिया. आई थिंक टूर्नामेंट टिकट्स होगी और सब होगा. अभी यहाँ भाई इतने लोगों का गिव अवे नहीं है. मतलब आप लोग आईडीज क्यों डाल रहे हो? ये सब आईडीज नहीं चाहिए थी भाई. आईडीज नहीं चाहिए. अभी और गिव अवेज नहीं है गाइस. मतलब आई एम गोइंग टू डू 10 फ्रॉम द क्वेश्चंस. जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनमें से पूछ रहा हूँ. जो अच्छे होंगे उनको uh, uh, किसी ने डायरेक्ट पूछ लिया मेरा डिपॉजिट 1,30,000 से ऊपर है, प्लीज कैश गेम टिकट नहीं. Thank you so much, man. Thank you, guys. Thank you. For me, it was my thank you so much. It was my first ever. Dual stream. Thank you so much. मुझे भी नहीं पता है काफी चीजें इसमें, so it's pretty exciting for me. Thank you so much. Thank you. Uh, and yeah, man.
यप यप यप। नो मोर टिकट्स वाइज, मैंने प्री स्ट्रीम के जिन लोग ने किया है, यहाँ मेरे पास प्री स्ट्रीम 58 फॉर्म्स है, 58 फॉर्म्स है प्री स्ट्रीम। तो 58 एंट्रीज है प्री स्ट्रीम में, 10 लोगों को दे रहा हूँ, और 10 तो विद इन द स्ट्रीम दे दिया। नेक्स्ट टाइम और करेंगे। क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ मैं। आर्यदर्शी का क्वेश्चन है, कैश गेम खेलने के लिए कैश होना जरूरी है या खुद का बैंक? इट्स अ नाइस वन। अभी आईडीज नहीं चाहिए गाइस। मैं एक आइकॉन कान्हा को दे रहा हूं, सो आई एम अनाउंसिंग द विनर्स। प्री स्ट्रीम विनर्स, आई एम अनाउंसिंग ड्यूरिंग स्ट्रीम विनर्स। हो गया। ओके, प्री स्ट्रीम में मैं फर्स्ट इज गोइंग टू आइकॉन कान्हा, बिकॉज उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कॉलेज लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड थी उस पे कुछ नहीं दे रहे। हमें भी दे दीजिए, अरे भाई। हाँ हाँ, मलिक साहब बोल रहे हैं मेरी आईडी देख के सब डालने लग गए। हाँ नहीं, कोई वो उसके नहीं है। किंग स्लेयर को दे रहे हैं अपन। किंग स्लेयर, दो आई थिंक ही हैज बीन प्लेइंग और स्ट्रीमिंग ऑन पॉकेट 52, बट इट्स ही हैड 6 क्वेश्चंस व्हिच वर नाइस। फिर एक है चंदू। नहीं, आप लोग ने ना नेक्स्ट टाइम याद करना गाइस कि जब आप पूछोगे तो एकदम डेप्थ में पूछना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उसका ही वैल्यू है। अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो उसका। केपीए प्रिंस ने अच्छे पूछे हैं, वी आर गोना गिव इट टू केपीए प्रिंस। ही आस्क्ड सम नाइस क्वेश्चंस। महाकाल ने सही पूछा है, मतलब भले उसका क्वेश्चन जेनेरिक है बट पूछा है उसने जेन्युइन का। Sky underscore CR7, congratulations. I'm announcing the winners. Uh, Rachit Gupta. यार रचित गुप्ता वॉज प्रीटी एक्टिव, बट यार आपका क्वेश्चन उसने सिलेक्ट नहीं किया ब्रो। अभी मैं कैसे करूँ यार, क्या पूछूं ब्रो? When you decide you're not going to continue betting with your hand, Emozian ka, I like this answer also. It's a good one. Emozian, I don't know, but I'm going to give him this thing. Red Baron के questions तो top level के हैं. Red Baron, if you're on stream, जो अभी बहुत ज़्यादा वो थे. Dreamer Devansh, we'll give him a ticket as well. Dreamer Devansh. Okay, Himanshu has asked a good question. How do you handle the psychological? So guys, जो pre-stream winners है महाकाल, KPA Prince, Sky underscore CR7, Emozen, Red Baron, Dreamer Devansh, Himanshu, King Slayer और Icon कान्हा। तो ये 10 लोगों को आप ये एंड में आप लोग सब प्लीज जाके देख लो। एंड बर्टल पोकर, अरे यार सॉरी गाइस, यार आप लोग आईडीज दे रहे हो, आईडीज का नहीं है गाइस। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। गुड स्ट्रीम, थैंक यू सो मच मैन फॉर, या highest ever for viewership on my this thing also. I know for my channel it's very big. Thank you man. चलो गुड नाइट भाई लोग। कल भी है शोभित भाई की स्ट्रीम, वहां भी होंगे।